I'm not trying to brag or anything, but I just finished typing my 124th email today. Few poor deliveries, and now you ball or no ball. Eighth no ball of the tournament, delivered by KP. First point of impact was just over that line, not allowed in it, and the foot slid. Finished quite in front of the line, but the first point of contact, that's what the umpires are looking for. Walidia Coup. And obviously the line belongs to the umpire. Always. Gone through. Runs. 4 of them. That is a good start. That is quality by Taimur Sultan. He's showing that why he's considered a big hitter batter for Northern. It was a free hit and wrong line. Taimur Sultan did collapse on that back knee a little bit, but it's the power play. Thickish inside half of the bat was enough to earn him a boundary. Now this is turning into a good start for Northern. First 2 overs, KP had good control. Abbas hasn't maintained that. You can see early signs out. The ball is not really coming onto the bat. You've got to really be precise with your plans. What do you want to get? And that is very important. Yeah, the last 4 runs he got was not comfortable. Not very intended, but he will take it. It's the runs that matters against a big side like KP. If you can get to that early good start, you do have enough batting left. After that, Umar Amin is in good touch. Mubassir is due. Oh, that is picked up nicely. That is handsome. That is out of the park. That is 6. Abbas' miserable over has come to an end right in the slot this time. He's given a few sighters to Taimur. This one was fuller in his half. And that cow corner seems to be Taimur's favorite area. Big over for Northern, 27 for none. "17 runs coming off that Abbas Afridi over. Expensive one. Should Khalid Usman be worried? Too early. You need to pull their act together though, that's for sure. Oh, inside edge. Oh, that is lucky. And you're brave enough, the luck favors you. That has happened to Nasir Nawaz. Boundary to start off Ehsanullah's over. How did it miss the stumps? How did it miss the stump? He was nowhere. Nasir Nawaz, that inside edge, saved his day. Terrific bowling. That length was the key, because Nasir Nawaz was nowhere with his feet. He's expecting a short pitch delivery, but his weight was always on his heels. Excellent bowling. Now also beaten by pace. He was not expecting it maybe. It's late on the shot. He's very lucky to be still there. Good delivery again. There's something about this boy, Ehsanullah. That length that he gets, the pace, his high arm action. And he's not scared to bowl those short deliveries. He's a brave bowler. Somebody like Shoaib Akhtar. He reminds me of him with his aggression. Fast bowlers naturally are aggressive in character. But if you can make the batsman hop like he's doing, I'm sure he will be loving it, and it'll give him a big heart. That's why he keeps trying those back of the line deliveries. Not real short pitch deliveries, but just the back of the line. Again, good carry, good carry. This boy has something about him, I tell you. He is the future. Very good.
talking about a genuine bumper. It was a genuine bumper. Look at that carry. Always on the up, even when the wicketkeeper took it. Both his feet up in the air, Rehan Afridi. Hands up above his head. Yeah, all he needs to do is that follow-up delivery. He needs to learn that if he can just bowl them in the right area after scaring the batters, that would be so handy. See, that's where that gully fielder comes into play. Slightly fuller in length. This is what Ali was talking about. You can go a yard fuller though, just to induce that drive. At the moment, it induces the forward defense. A slightly fuller will induce the drive. That's where he can get the edges. Yeah, that's where he needs to learn. Northern Camp is a happy camp at the moment. Yeah, if you have pushed the batter on the back foot, the follow-up delivery, the full delivery that you were just talking about also, it needs to be good. It needs to be in the right area, right channel. Then you will fulfill that intent that you had earlier. See that gully fielder in the background as Arslan aborts his run-up. That is an important position for him. Even that fielder is quite far back, almost at backward point in that same gully line, but almost to the edge of the circle. He's moved forward now, Amir Azmat. That is a catching position. It's got good pace, and when the batter cuts it, it really goes to that fielder quickly. You got to have your best fielder there to somebody like Ehsanullah. Nicely driven, but straight to the man. His weight is always on the back foot, Taimur Sultan. Not a solid enough base. You watch closely. Once again, his back knee collapses. He's likely to hit those in the air at some stage. KP would have to keep their hands dry. They've already missed one opportunity, and they might get a few more pretty soon. You see that fielder at third and gully fielder, they're right in front of each other. It's quite towards that point. The third fielder, you see, top left. Again, that fielder. That is a good over. Just 5 off it. 4 overs gone, 32 for none. अभी तक नॉर्दर्न के ये दोनों ओपनर्स ही ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। तैमूर सुल्तान जो हैं उनको बड़ा सुनहरी मौका मिला है खुद को मनवाने का इतने बड़े स्टेज पर। खालिद उस्मान खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स आज विकेट हासिल नहीं कर सके। एक कैच नासिर नवाज का ज़रूर सरवर अफरीदी ने गिराया था। विकेट बैटिंग करने के लिए अच्छी लग रही है और नासिर नवाज फॉर्म में भी हैं। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, यही इस वक्त 2 आउटफील्डर हैं। और इसे उठा हमारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये फलक शिगाफ छक्का। नासिर नवाज जिन्होंने बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया और स्पिनर के पहुंचते ही उन पे पिल पड़े। खालिद उस्मान का इस्तकबाल किया इन्होंने सेमीफाइनल में, जगह दी थी, हल्का सा स्लो पेस डिलीवरी कराई थी खालिद उस्मान ने, इसलिए टाइम भी मिल गया था पीछे हट के मारने का नासिर नवाज को। पावर प्ले के अंदर ये बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत नपी तुली बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा टर्न देखने को नहीं नजर आया। इस बार अगेंस्ट द टर्न खेला लेकिन क्योंकि स्लो टर्न हुई थी इसलिए वो मुश्किल नहीं रही नासिर को। अब तक 39 रन नॉर्दर्न ने बनाए हैं, 10 गेंदें बाकी हैं इस पावर प्ले में। 59 रिकॉर्ड स्कोर है पावर प्ले का इस मुल्तान की पिच पर।
जो सिंध ने बलूचिस्तान के खिलाफ बनाया था, लेकिन वो नाइट मैच था। कल 50 रन स्कोर किए थे खुद खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान के खिलाफ, और आज वो रिसीविंग एंड पर इस मरहले पर। हल्के हाथों से खेला, सिंगल का मौका नहीं दिया खालिद उस्मान ने। बहुत अच्छे फील्डर भी हैं खुद। नासिर नवाज के जो ओपनिंग पार्टनर्स हैं वो बदलते रहे हैं। ये खालिद उस्मान ने बहुत अच्छा एंटीसिपेट किया, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और हमेशा दिलो जान से मैदान में नजर आते हैं खेलते हुए। उम्दा शॉट और उतनी आला फील्डिंग भी। आदिल अमीन ने 3 रन बचाए यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। शॉट अच्छी थी, दुख जरूर होगा कि बाउंड्री हासिल नहीं की, लेकिन ये नॉर्दर्न की फील्डिंग का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे फील्डर्स हैं सारे ही। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद अच्छा खत्म किया इस ओवर को कप्तान खालिद ने। 41 और कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तमाशाई हालांकि खाल खाल हैं, दोपहर का वक्त है, खासी गर्मी है, और क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है इसलिए दिलचस्पी बराबर बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट की। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड पहला T20 इंटरनेशनल मैच कराची इसकी मेजबानी करने को है। मंगल को खेला जाए पहला मैच। अरशद इकबाल को अब उनका एंड तब्दील किया गया। एहसानुल्लाह जो पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे थे उनकी जगह लाया गया है, लेकिन पेस का अच्छा सामना किया है इन दोनों ओपनर्स ने, क्योंकि कई टीमें खैबर पख्तूनख्वा के पेस के सामने पसपा होती हुई नजर आई थी पावर प्ले के दौरान ही। मरीना काफी तहम्मुल बैटिंग की है इन दोनों ने और जज किया हुआ अच्छा एहसानुल्लाह को। ये चीज मिसिंग थी नॉर्दर्न के पास, और मेरा ख्याल है कि एक बॉलर इन्होंने ऐड किया। जिम्मेदारी अब ज़्यादा बल्लेबाजों पे आ गई है, उन्हें पता है कि उनका किरदार बहुत अहम है, तो ये जिम्मेदारी जब लागू हुई है इसका भी काफ़ी असर नज़र आया हमें। अच्छी बैटिंग हो रही है, कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं अभी तक नॉर्दर्न के ओपनर्स ने। इस बार पेस का सही सामना नहीं कर सके और ये कैच दे बैठे। आपने फॉलो थ्रू में जाकर इस हाई कैच को आखिर में लेने में कामयाब हुए अरशद इकबाल। तो अपनी मदद आपके तहत ही उन्होंने ये पहली विकेट दिला दी खैबर पख्तूनख्वा को। तैमूर के लिए बाउंस ज्यादा था, गेंद उछलती चली गई। अरशद इकबाल ने कामयाबी हासिल की। बैकवर्ड से लेंथ थी, अंदर भी गेंद आ रही थी इसलिए क्रैम्प भी हो गए, रूम नहीं था और बाउंस भी मिलता जा रहा था। टॉप ऑफ द बाउंस नहीं आ पाए तैमूर। उनको दुख ज़रूर होगा कि अच्छा स्टार्ट मिल गया था लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 21 बना के वापस नॉर्दर्न 42 पे 1। तैमूर सुल्तान को अरशद इकबाल ने नीचा दिखाया, उन्हें शॉर्ट गेंद पर उन्हें चलता किया। उमर अमीन अब मैदान पर उतरे, 139वां मैच खेल रहे हैं। इसी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपने 3000 रन भी मुकम्मल किए। कोई सेंचुरी नहीं है, थोड़ी सी हैरानी की बात है। हालांकि वन डाउन खेलते हैं, ज़्यादातर टॉप ऑर्डर का ही हिस्सा रहते हैं। इन्होंने ओपनिंग भी की है, अगर
सही याद पड़ता है मुझे T20s में। और ज़्यादातर जो सेंचुरियां हैं, कल जो साहबजादा फरहान ने सेंचुरी बनाई थी, उससे पहले शर्जील खान ने, ये पाकिस्तान में ओपनर्स नहीं बनाई हैं। लेकिन तैमूर सुल्तान जो हैं वो आज ओपनिंग करने के लिए आए और इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके, पुल करते हुए आउट हुए। स्पेशली जब आप किसी जेन्युइन इन स्विंग बॉलर को पुल शॉट खेलते हैं तो उसकी लाइन, इनसाइड द लाइन आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गेंद आखिरी लम्हात तक अंदर आ रहा होता है। आउटसाइड ऑफ में अगर आप फैच करने जाएं तो टॉप एज के ज़्यादा चांस होते हैं। यही गलती इन्होंने की, अपनी जगह पे खड़े खड़े पुल करने चले। इस बार अच्छी हमांगी, जो ही गेंद कदमों में गिरी, नासिर की उमर ने भागना शुरू कर दिया। इस तरह की अर्जेंसी की ज़रूरत रहेगी। एक एक रन बड़ी अहमियत का हामिल है इस नॉकआउट मैच में। बिल्कुल कैरेड अवे बिल्कुल भी नहीं हो सकते नॉर्दर्न। ये अच्छा रन था, नासिर ने अच्छा डिफेंड किया, लेकिन नज़र उनकी गेंद पे थी। बॉल उम्दा कॉल थी उमर की। सिंगल डबल्स इन्हें रोटेट करते रहना पड़ेगा, कि इतनी आसानी से केपी बाउंड्रीज वाली ऑप्शंस देगा नहीं। हम बात कर रहे थे कि उमर अमीन की कोई सेंचुरी नहीं है T20 क्रिकेट में, तो कल साहबजादा फरहान ने जो सेंचुरी बनाई है 58वीं सेंचुरी थी पाकिस्तान में T20s में, और इन 58 में से 47 जो हैं वो ओपनर्स ने बनाई हैं। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओपनर जो है उसके लिए ज़्यादा मौके हैं बड़ी इनिंग्स खेलने के। जब हम मिडल ऑर्डर की बात करते हैं या बहस छेड़ते हैं तो ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि मिडल ऑर्डर के बैट्समैनों को कम वक्त मिलता है, मोहलत ना होने के बराबर ही होती है इस फॉर्मेट में। बिल्कुल, क्योंकि तब तक फाउंडेशन सेट हो जाती है, आपको एक सर्टन रन रेट के साथ स्कोर करना होता है, इसलिए मिडल ऑर्डर वाले कोशिश ये करते हैं कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेले। ओपनर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जैसे जैसे इनिंग्स बढ़ रही है, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में अपना रन रेट बेहतर करें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें। एक तरह की इनिंग्स ओपनर्स भी नहीं खेल सकते, तो वो आर्ट जिसको आता है एक्सेलरेट करने का, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है सेंचुरी गिरफ्त जाए। फील्डिंग में तब्दीली लाई गई, थर्ड मैन पर सरवर आफरीदी को अब आगे बुलाया गया, मिड विकेट को पीछे हटा दिया गया। अच्छा कमबैक किया है अरशद इकबाल ने। पहले ओवर में खासे रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में किसी भी गेंद पर एक से ज़्यादा उनकी बॉलिंग पर नहीं बन सका। विकेट उसके अलावा थी 46 पर 1। स्टंप करने की कोशिश की रेहान आफरीदी ने, लेकिन टीवी अंपायर से पूछा जरूर है, पता ज्यादा खतरा लगता नहीं क्योंकि पिछला पांव जो है इनका क्रीज के अंदर ही था। बजाय नासिर क्रीज से बाहर निकले नहीं थे, पीछे को जरूर हटे थे एक बार फिर रूम बनाने के लिए, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि उनका पांव जो है वो ड्रैग नहीं हुआ होगा। बायस पहले नो बॉल चेक कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और हट के स्पिनर्स को अटैक करने जाते हैं। ये देखें पांव अंदर ही रहा है, ना उठा और ना ही क्रीज से बाहर ड्रैग हुआ। यहाँ अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुई नॉट आउट देने में। यहाँ खासी हद तक जो पेस है ये सेट कर दी है नॉर्दर्न के ओपनर्स ने अपने आने वाले खिलाड़ियों के लिए, और ये इनिंग्स को यहाँ पर उठान मिल सकती है। अक्सर इस खेल में यही देखा जाता है कि जो ओपनर्स हैं ये पेस सेट करते हैं और मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो उसी के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, जैसे कल साहबजादा फरहान ने किया था।
बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे कि ओपनर्स के लिए भी ज़रूरी है कि एक्सीलरेट करें। शहजादा फरहान ने जो 50 रन किए थे मुकम्मल, वो उन्होंने 40 गेंदों पे किए, और फिर जो अगला 50 था 100 के लिए, वो 21 गेंदों में किया। तो टीम और T20 फॉर्मेट की ज़रूरत यही होती है कि आप अगर सेट होते हैं तो फिर लंबी इनिंग्स के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन एक्सीलरेट करना बहुत ज़रूरी है। आमिर जमाल के पाकिस्तान टीम में शामिल होने के बाद इनकी जो टेल है ये ज़रा सी लंबी हो जाती है। कल उस्मान शिनवारी और सुहेल तनवीर ने ज़रूर संभाला दिया था इब्तदाई 7 विकेटें गिरने के बाद, और थोड़ी सी फिक्र ये भी रहती है फिर जिस टीम की टेल लंबी हो उसके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं वो कदरे कई बार संभल कर खेलते हैं और वो ज़्यादा हार्ड जाते नहीं हैं, खासतौर पर जब आपका विकेट कीपर भी रन्स में ना हो। स्ट्रगल कर रहा था नॉर्दर्न, और अब आमिर जमाल का बहुत अहम किरदार रहा है इनकी कामयाबियों में भी। गेंद से भी, बल्लेबाज भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ये अब ज़रूर है कि जिम्मेदारी टोटली जो है वो बैटर्स के ऊपर आ गई है। जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है नीचे। सुहेल तनवीर बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं, तो कैलकुलेटेड होके इनको अब चलना पड़ेगा, लेकिन कॉशियस नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने के लिए गए, एक बार फिर एतमाद से नहीं खेल सके। खासा परेशान किया है इन दोनों ओवर्स में खालिद उस्मान ने नासिर नवाज को 51 पर 1। अच्छा आगाज किया नॉर्दर्न ने, थोड़ा सा संभल के इब्तदाई ओवर्स खेले। ये एक चांस ज़रूर था, टिप कर गया था गेंद, लेकिन सर्वर ने कैच करने में वो नाकाम रहे। अच्छी शॉट्स देखने को मिली तैमूर और नासिर नवाज की जानिब से। ये बहुत ही बुलंदों वाला छक्का था। खुशकिस्मत ने भी आज इनका साथ दिया, लेकिन अप्रोच अच्छी रही है नॉर्दर्न की। किसी के बॉलर्स और स्पिनर्स को बहुत संभल के अच्छे तरीके से खेला। ये पहला नुकसान उठाना पड़ा। तैमूर सुल्तान की विकेट अरशद इकबाल ने हासिल की। नॉर्दर्न का हम देख सकते हैं मुल्तान में आकर उनकी बैटिंग का बोलबाला हुआ है। उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा है, 109 से 121 हो गया है, और औसत में भी 10 का इजाफा हुआ है। यहाँ के खिलाड़ियों ने 2 निस्फ सेंचुरियाँ भी स्कोर की हैं। तो जो मुल्तान की सरजमीन है, ये रास आई है नॉर्दर्न के बैट्समैनों को। अपने होम ग्राउंड पर इनको बैटिंग के मसाइल का सामना था। ये वाइड हो जानी चाहिए। अब्बास आफरीदी आज पहले ओवर से ही दबाव में हैं और कुछ ज़्यादा तेज़ गेंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा देखा है कि इनका जब ये स्विंग करते हैं, अच्छी लेंथ से अंदर लाते हैं, तब ज़्यादा कामयाब रहते हैं। यहाँ पे जैसे आपने बोला, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने जा रहे हैं। हार्ड लेंथ पे जब भी गेंद गिरा है, उसने थोड़ी मुश्किल ज़रूर पैदा की है बैटर्स के लिए। यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते हैं और कामयाब हो जाएंगे। फील्डर को बहुत पीछे से आना पड़ा था, तकरीबन 72-73 गज दूर से साहबजादा फरहान को। बहुत उम्दा रनिंग है ये, बहुत ही हल्के हाथों से खेला, गेंद अंदर आया, लेकिन जानते थे कि दायरे से बाहर नहीं गया, इस वजह से 2 रन आसानी बनाने में कामयाब रहे। टॉस के मौके पर उमर अमीन का ये ख्याल था कि यहाँ पर 160-165 रन जो हैं वो उनकी टीम को मुकाबले पर रखेंगे। कल का दिन लो स्कोरिंग था और इस बार टॉप एज शामिल था इस शॉट में, लेकिन इसकी फिक्र नासिर को बिल्कुल नहीं थी। गेंद बड़ी तेजी से चली आई वकार यूनुस एंड पर। क्या ये 4 है या 6, इसका फैसला होना बाकी। अब्बास अफरीदी ने थोड़ा ट्रैप जरूर कर दिया था नासिर नवाज को। खुशकिस्मत रहे कि टॉप एज जो है वो कीपर के पीछे गया। ये देखना है ऑल द वे कैरी किया है या एक बाउंस, दूसरे एंगल से बेहतर पता चलेगा, लेकिन थोड़ी अच्छी पोजीशन में नहीं आ पाए नासिर नवाज। रन आ रहे हैं, यही अहम है उनके लिए।
ये बैट्समैन नासिर थे, अंपायर भी नासिर हैं और वो इस बात का फैसला करेंगे। टीवी अंपायर, ये गेंद टिपक आती हुई जाकर लगी है, ये किंगडम वैली की जो स्कर्टिंग है उससे टकरा रही है। 4 रन ही होने चाहिए। नासिर नवाज तैमूर सुल्तान के आउट होने के बाद कोशिश हैं कि हर ओवर में एक बार जरूर खतरा मोल लिया जाए, यही अच्छी सोच भी है। ये बैट पर लगी, लेकिन क्या बल्ले से भी लगी थी, क्योंकि सिर्फ यही एक सूरत थी बच जाने की। नासिर नवाज के 2 आवाजें आई थी। लेग बाय का इशारा किया अंपायर ने और इससे पता चल रहा है कि बल्ले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बहुत ही क्लोज मामला लग रहा है, पिछली टांग पे खाया है। हाँ, ये बजाय ऐसा लग रहा है कि बॉलर यहाँ पे बदकिस्मत रहे हैं, क्योंकि अगर बल्ला इसमें शामिल नहीं था तो फिर तो ये बिल्कुल साफ साफ मामला लग रहा था। बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने खाया, पिछली टांग पे। लग ये रहा था कि शायद बल्ला इन्वॉल्व हो, वही जैसे आपने कहा वही सूरत थी कि वो बचते। खुशकिस्मत है नासिर, फेवर उनकी, ये डिसीजन उनकी फेवर में गया। उमर अमीन और नासिर नवाज ये एक साथ बैटिंग करना पसंद करते हैं। ये दाएं और बाएं हाथ की पार्टनरशिप जो है इससे पहले भी कारगर रही है और मुल्तान में ये शायकीन कभी भी मायूस नहीं करते। यहाँ टेस्ट मैचेस में भी हमेशा अच्छा रद्द अमल देखने को मिलता था। हालांकि ये मैदान जो है वो सिटी सेंटर से खासा दूर है। अच्छा सिंगल, अच्छी औसत से स्कोर कर रहे हैं, 7.6 और इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। 10 ओवरों के बाद थोड़ा सा एक्सलेट करना भी इन्हें पड़ेगा। अब्बास अफरीदी की गेंद पर जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी वो अंपायर ने फैसला उनके हक में दिया नहीं, लेकिन नासिर नवाज जो है खासे खुशनसीब लगते थे, क्योंकि ये देखिए विकेटों के करीब से गेंद की और ये गेंद जो है ऐसा लगता है कि ये बेल्स को तो जरूर लगती, मिडल स्टंप की बेल्स को। अगर ये अंपायर ने हाइट का मामला समझ करके इस अपील को रद्द किया है तो भी ये बेल्स जरूर टकरा जाती 61 पर 1। Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can go to their Facebook page and get a chance to win exciting prizes, and definitely you can be the next winner. Twelve wickets for Maaz Khan. You got to feel that Northern have been very lucky today. Couple of good chances going down, some inside edges, a few decisions going on their favour. They've got the platform set for that big total. Nasir Nawaz has looked good. He's been lucky. Very well ball, Maza. Good shot, Naz. Good shot, the Gora, Shabash.
Khan was good yesterday. This is the specialist inclusion which they made, KP, in the game last night. Worked for them. They were surely a bowler short in the streak of 4 losses. But they need wickets here. Things can rapidly change in this format. You can always be looking good. With 62 for 1, we've seen time and again. It's very easy to lose your way. So the concentration levels have to be 2 point in every single over. You've got to get to the 160 mark no matter what the pitch is. A knockout, or call it a semi-final, but put everything that you are about as a team. Absolutely. This is the moment, this is the day when you have to bring your A game. And I like Umar Amin's captaincy also, promoting himself at number 3. He realizes that there are problems at top order. He's taking it on himself. That's good, brave captaincy by him. Oh, that's gone through. We've seen it before as well, not from the same fielder. Got to quickly cover the ground and get in position to stop the ball. Yes, it was travelling, but this is not acceptable. I was hit really hard by Nasir Nawaz. But at this level, you got to stop those, and especially from a youngster, you do not expect that. That's Amir Azmat. Not good cricket. You're giving away these easy runs. Easy one, easy one. 9 overs gone, 68 for 1 Northern. Abbas has been expensive. See that. 2 overs, none for 25. He was good yesterday. One over in the power play and the other outside. Still gone for 25. What do you make of this decision, leaving out Imran Khan Sr. on a big game, playing 2 youngsters in their seam attack? That must have been a big decision to make for Khalid Usman and the camp. I think if you go by the performances, he was being a touch expensive, especially in the death overs. He's got experience, sure. But he's gone for the youngsters in the side. Abbas was arrested through and through, and then suddenly 2 games. And important ones. Yeah, just because he bowled beautifully in the game yesterday, so probably they had to play him. But then that, as you said, experience behind Imran Khan. He's been around for a long time. In this big game, I thought maybe they could have taken chance with him, just to put that stability in that bowling lineup. There are too many youngsters. If you look at their bowling lineup, Ahsanullah, very young, Abbas Afridi, Imran Khan Jr., they're all youngsters. You do need experience in these big matches. Slightly uppish, but a good placement there to the left of long on. 2 completed with these. Runs are coming quite easily now. 7.5 runs and over. I beg your pardon, Imran Khan Jr. is not included. It's Mahaz Khan, the other youngster, as a leg spinner. Regardless, they're youngsters replacing a youngster. Still a very young bowling lineup, and batting has not been clicking. They will be hoping for Kamran Ghulam Show or Sabzada Farhan Show to chase down whatever is being posted. Sarwar has been very impressive. He's been given the task to bowl in the power play also. He bats well. He's sort of a bowler when you think he will never leave his line, just ball at similar line and length.
Not much pace behind him, but still that length and line has been wonderful from him. Nice shot. That'll be 4. He was looking for that gap on the previous delivery as well. This time was hit hard, and you'll see it on the replay. The fielder in cover wasn't really far away from the ball. It's just the pace on that shot didn't allow him. Very handsome. Whenever Umar Amin plays like that, that shows that he is in the mood, because he's hitting right from the middle of the bat, standing tall and playing it with some force. No chance for that fielder at extra cover. That is a beautiful shot, and that is, it's not a good news for KP. If he's playing like that, I tell you, he's definitely in for a big one. You're talking about youngsters. It's very subjective. I don't know what the youngster is. If you talking about experience, what is experience? Are you deciding that with the number of games? Are you talking about with the kind of cricket you've played? If you've had the, for example, in this format, if you played the PSL, then you've had the experience of a full house playing against international players. Like Arshad Iqbal has played 50 T20s, so is he experienced? But he's young. Or experience to you is Sohail Tanveer, 370, 60 games. We'll come back to that. 10 overs gone. It's 77 for 1. Pakistan, England, 70 20s starting from the 20th. And make sure that you buy the first day's ticket, because that collection is going towards the flood of victims. You can go ahead and buy your ticket today and aid in contribution towards flood victims. You can log on to pcb.bookme.pk to buy your seat. Remember, the first T20's earning through ticket sales will go to the flood of victims. Good cause. I'm hearing Lahore is sold out, so don't give excuses. Go and buy them now. So yes, coming back to the discussion or the talk about experience versus youngsters. I don't know, young as in age or young as in number of games you played. Because you will consider Shaheen Shah Afridi as a senior pro now. If you get the number of games he's played, then you'll be surprised. Yeah, to me it's all about experience. How many games that you have represented and how many different leagues that you have played, different teams represented. If you look at the numbers from KP side, Ihsan is into his 7th game, Abbas into his 11th, Maaz into his 13th. Only Arshad Iqbal has played 50 games as far as the seamers are concerned. Khalid Usman also all-round cricketer. That kept low. Maaz Khan is a good talented bowler. Look at that. The length was there to be hit, but lucky that the line was not right. So what is the number of games according to you? How many games a player has played you say that now he's not a youngster anymore? Why? Well, it has to be 50 plus games. Different conditions, different situations. And Arshad Iqbal, as you were talking about, is still young, but he's experienced. Because fast bowling is an art. You know, you need to spend time in the ground. You need to bowl long overs to get that experience. Although we get only 4 overs in a T20 game, but still, if you have played enough games behind you, you bowled enough overs, you've been into different situations, you know how to get batter out. So that's experience for me.
Straight over the bowler's head. That'll be 4. It'll be 4. Yeah. The placement was excellent. There were 2 fielders, but he placed it right between those 2. Look at that, straight as an arrow. 2 fit cricketers, Sabzada Farhan and Amir Azmat, placed there, but they had no chance. Good effort though. That'll be 6 on any ground in the world. Maximum to end the over, and Nasir Nawaz hits a maximum and takes the team to Northern 90 for 1. Come on, boys. Boys. The last 6 that was hit by Nasir Nawaz, that was some force. Look at that, nice shoes of the wrist, nice footwork, just came out late enough and deposited it over the stands. This is swept nicely, but fielder is placed there, just 1 run. Khalid Usman definitely look under pressure because Northern are off to a good start. They've got that platform set for the last 8 overs. They can get to that 160 or 170 that you were mentioning. So the last one on that experience thing. So Shaheen Shah Afridi is 22 years of age. How many games do you think he's played? T20s. That's the thing. I mean, youngster. He's still a youngster. He's got 119 T20s already. 4. They're getting a boundary here and there every over. And this will eventually surprise KP when they reach over number 20. And Khalid Usman knows it, that this partnership needs a break, because 54 now is the third 50 partnership between these two, Nasir Nawaz and Umar Amin. Easy one. The last hit from Umar Amin, that were forcefully hit. Similar to that Nasir Nawaz played in the last over. 2 fielders placed right between them with force. 7 runs for Khalid Usman. He's got some questions to answer because this partnership is now 55. It's a good ball. Dot ball, 7 of the over. 97 for 1 after 12. बहुत ही उम्दा इब्तिदा नासिर नवाज ने आज फराहम की है नॉर्दर्न को, और 2 अच्छी पार्टनरशिप्स में वो शामिल रहे हैं। पहले तैमूर के साथ 42 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, और अब ये 55 रन की दूसरी विकेट के लिए उमर अमीन के साथ जो अभी तक अटूट है, और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए वापस लाएं अपने इस फास्ट बॉलर को, एहसान उल्लाह को। बार फिर बाउंस पेस हैरान किया उमर अमीन को। आज थोड़े से बदकिस्मत भी रहे हैं एहसान उल्लाह, बार बार वो बल्ले को
मात देते रहें। फिर बाउंस ही मात देने में कामयाब हुई। उमर अमीन को थोड़ी सी विट मौजूद थी, लेकिन उमर अमीन नीचे से खेल गए। बैकवर्ड पॉइंट पे जो फील्डर है, काफी इंपॉर्टेंट फील्डर है एहसानुल्लाह के लिए। इस तरह का वो बाउंस हासिल करते हैं, वो कैचिंग पोजीशन भी हो सकती है। और जो कवर का फील्डर है वो भी काफी स्क्वायर है, बिल्कुल जो स्क्वायर लाइन है उससे जरा सा सामने। और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा ऑफ द सीम। ये गेंद बाहर निकली और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों में फर्क साबित हो सकते हैं। और यहाँ स्लिप बुलाने में भी कोई मुजायका नहीं, क्योंकि उमर अमीन के पांव जो हैं वो बिल्कुल गलत जगह पे पड़ रहे हैं। 12 ओवर हो गए, थोड़ी सी शेप भी उनको मिल रही है। क्या ये रिवर्स स्विंग है या सीम मूवमेंट है? लेकिन बाएं हाथ से खेलने वाले उमर अमीन को छोड़ती हुई बॉल निकल गई। स्लिप अच्छा आइडिया जरूर है, लेकिन अभी तक कप्तान खालिद उस्मान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन विकेट्स की जरूरत है खैबर पख्तूनख्वा को। ये अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पर यहाँ पर पाए जाएंगे। नासिर नवाज को सिर्फ एक रन की जरूरत है। और ये फास्ट बॉलर की खूबी होती है, जो आउटराइट पेस बॉलर होते हैं, यूं ही वो पहुंचते हैं बॉलिंग करने के लिए तो सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेते हैं और खेल जो है वो ऐसा लगता है बिल्कुल मुख्तलिफ होने लगता है, मंजरनामा बदल कर रह जाता है। तो ये हमने देखा है साल से 80-90 की दहाइयों में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर के ज़माने में मोहम्मद जाहिद थे, बहुत तेज बॉलर थे। ये तो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कल्चर के साथ चली रही है फास्ट बॉलर्स की रिवायत। थोड़ी नीचे रह गई। आज है यहाँ पर फिर से देखा है कि थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल है बाउंस के जिम्न में, लेकिन रफ्तार बेहतर है इस पिच की कल के मुकाबले में। ये बिल्कुल खुसूस पहली इनिंग्स है आज के दिन की। ये देखिए तवील कामत बॉलर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनका बॉल इतना नीचे रहेगा, इसलिए धोखा खा गए नासिर। फास्ट बॉलिंग की लेगेसी की आपने बात की, रनअप्स की जब भी बात होगी तो वकार यूनुस और शुएब अख्तर का भी जरूर जिक्र आएगा। इसी एंड से ये वकार यूनुस एंड से आ रहे हैं एहसानुल्लाह। यहाँ से शुएब अख्तर ने एक स्पेल किया था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के आखिरी दिन और उसी पर फैसला हो गया था उस टेस्ट मैच का। लाजवाब गेंद, क्या ये लगी थी ग्लव को? ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार अंपायर वलीद याकूब ने इसे नॉट आउट करार दिया। आवाज जरूर आई थी। इंटरेस्टिंग रिप्ले होगा। क्या वलीद याकूब चूक गए ये ग्लव को लगते हुए बॉल को देखकर, और या फिर अपील ही नाजायज थी? देखते हैं। जहां ये आवाज आई थी और गेंद बल्ले के बहुत करीब से निकली है, क्योंकि इससे ये देखिए पहले डक करने के मुतालिक सोचा, फिर बल्ला इनका क्योंकि हवा में था और बल्ला जब बचाने की कोशिश की तो देर कर गए, आवाज आई है। ग्लव तो दूर था, लेकिन आपने सही डिस्क्राइब किया तारिक। खुशकिस्मत रहे नासिर। यहाँ खासे खुश नसीब रहे हैं। पहले इनका कैच गिरा, उसके बाद एलबीडब्ल्यू की एक अपील नासिर के खिलाफ मुस्तरद हुई, अब कॉट बिहाइंड की। किस्मत मेहरबान है आज नासिर नवाज पर, 98 पर 1। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 एक T20 चैंपियनशिप यूएई में हो रही है 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, और दुनिया भर की टीमें शरीक होंगी। बस आया ही चाहती है ये ट्रॉफी भी चंद दिनों में। पाकिस्तान में तमाशाइयों की तादाद बढ़ते हुए
यूं दोपहर का वक्त गुजरता जा रहा है, ग्राउंड में तमाशाइयों की आमद जारी है। फजल महमूद इनक्लोजर में इस वक्त भी रौनक देखी जा सकती है। कोई नौजवान मौजूद हैं इस सामने पवेलियन के साथ जो स्टैंड बनाया गया है, जिस पर छत भी है धूप से बचने के लिए। फजल महमूद पाकिस्तान के ये पहले क्रिकेटिंग हीरो थे जिनने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में पाकिस्तान को फतह दिलाई थी और भारत के खिलाफ लखनऊ का टेस्ट मैच जितवाया था। वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया, पोर्ट ऑफ स्पेन में। इसके अलावा कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को अव्वलीन कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान की इब्तिदाई ये याम के पहले गोल्डन बॉय के नाम से भी मशहूर थे और वहां से जो लेगेसी शुरू हुई वो मुसलसल चलती ही रही और आज भी है। आज के दौर के शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और इसे उठा मारा और गेंद चली है मैदान से बाहर। ये गेंद जो पाले में थी, उमर अमीन ने हाथ साफ कर लिया और ये टिपिकल लेफ्ट हैंडर का शॉट था लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ। खराब गेंद थी, शॉट, और उमर अमीन ने जल्दी इसको पिक कर लिया। जब बॉल टकराई बल्ले से तो बहुत ही अच्छी आवाज आई। के बाद इस गेंद का ग्राउंड में रुकना मुमकिन नहीं था। 100 रन भी मुकम्मल हो गए। नॉर्दर्न की इनिंग्स के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया इन्होंने। पर खुद को शॉक करा लिया। ज्यादा तेज गेंद की इब्तदाई जो इनके ओवर से उसमें ज्यादा रफ्तार के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे खालिद उस्मान, लेकिन वो जानते हैं कि अक्सर होता है कि फिंगर स्पिनर्स का आखिरी ओवर होता है, उसमें सामने बैट्समैन जाते हैं हमला करने के लिए। काफी देर से 40 के पेटे में नासिर नवाज साइड में मिड विकेट के फील्डर को वाइड किया गया और विकेट कीपर नहीं रोक सके। बैट्समैन पहले ही बीट हो गए। यहाँ दूसरे रन के लिए भी मुड़ आएंगे वापस। अभी भी इनको इंतजार करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट सेंचुरी के लिए। बिल्कुल, और खालिद उस्मान सिवाय मुस्कुराने के और कुछ कर नहीं सकते। बॉल से पहले रेहान अफरीदी नासिर नवाज को याद दिला रहे थे कि वो कितने खुशकिस्मत हैं, लेकिन रेहान जब आप स्टंप नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइए कि बाकी दूसरे एंड पर क्या हो रहा है। तो बिल आखिर ये 50 रन हो गए मुकम्मल। नासिर नवाज की बड़ी उम्दा बैटिंग। आज किस्मत ने जरूर उनसे यावरी की, लेकिन वो अपने स्ट्रोक खेलते चले गए। ताकतवर बैट्समैन हैं और इस ड्रेसिंग रूम का ये बड़ा सहारा है नॉर्दर्न के। उमर अमीन एक बार फिर अब ये बड़े शॉट खेलने के लिए पर तोल रहे हैं और 2 बार इस ओवर में कामयाबी भी मिली। ये 4 रन। इनका फेवरेट शॉट है स्लॉग स्वीप। मर्तबा लेंथ मिल गई थी उन्हें। खालिद उस्मान को आड़े हाथों लिया हुआ इस ओवर में। रफ्तार थी इस बॉल में और एंगल भी फील्डर की पहुंच से दूर। 14 रन पहले ही दे चुके हैं खालिद उस्मान और गेंद को दूर किया। एक बार फिर ये लंबा हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन से आगे नहीं जा सकी और कामरान और जाना पड़ेगा वापस उमर अमीन को, जो बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे। और खालिद उस्मान के इस ओवर में उन्होंने तीसरी बाउंड्री लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद आहिस्ता थी, इसलिए शॉट में वो कुव्वत भी नजर नहीं आई। जी, आहिस्ता भी थी और दूर भी थी उनसे। गेंद को लपेटना पड़ा और इस वजह से वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। मॉडर्न डे बैटर्स ओवर में 1 या 2 छक्कों के बाद भी जो है वो अटैक पर जाते हैं। उमर अमीन ने वही कोशिश की लेकिन आउट हो गए। 32 रन बनाए 112 पर 2।
जीशान मलिक इन्होंने भी मुख्तलिफ पोजीशंस पर बैटिंग की है इस चैंपियनशिप में। पिछले 2 मुकाबलों से नंबर 4 को इन्होंने अपनाया। अच्छा खेलते रहे जीशान मलिक, चुपचाप अपना किरदार इन्होंने बेहतर तरीके से अदा किया है। नॉर्दर्न की बैटिंग में अक्सर हम देखते हैं कि इनके जो टॉप ऑर्डर या जो स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर में भी उनको खेलना पड़ता है। उमर अमीन के अलावा आज तक कम देखने को मिला है कि इनका कोई खास जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हो वो देर तक खेला हो इस टीम के लिए। जी, जब से उमर अमीन टीम में आए हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, या फिर लोअर ऑर्डर में सुहेल तनवीर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट में। ये इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि नासिर नवाज मिनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, जीशान नए हैं। इस गेम की स्टेज में नॉर्दर्न ने स्ट्रगल किया है अपना गेयर आगे बढ़ाते हुए और रन की रफ्तार में इजाफा करने में कामयाब हुए नहीं पिछले मैचों में। यहाँ अगर ये जो बाकी मानदा तकरीबन 6 ओवर्स हैं, 10 के औसत से रन बनते हैं तो 172 होंगे और वो पार स्कोर होगा 172 175 रन जो है ये अगर बनते हैं तो शायद खुश जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की टीम निस्बतन बुरे आगाज के बाद। ये देखिए गेंद को दूर गिराया, बैट्समैन को मजबूर किया कि वो खुद सर्व करें। जो नॉर्दर्न की आप बैटिंग की स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे, अगर आप देखें तो मुबस्सिर आने वाले खिलाड़ी हैं और रोहेल नज़ीर, वो दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं और शायद इस स्टेज के लिए ज़्यादा सूटेड भी नहीं है। आमिर जमाल थे पहले मैचों में इनके मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में एज ए फिनिशर, उनकी कमी भी महसूस करेंगे। उम्दा शॉट, लाजवाब फुटवर्क और शानदार चौका लगाया। ये पहला स्कोरिंग शॉट है जीशान का और उनने अपना दबदबा दिखाया। अगर ऐसे बैटिंग करेंगे तो फिर किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल रोलिंग शॉट, सिर्फ एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बीट करना था और खूबसूरती से ये काम कर दिखाया जीशान ने। फिर उठाकर खेला, एक ही रन मयसर आएगा। यहाँ क्योंकि एक बिल्कुल बन चुका है वो मकाम जहाँ से ये उठान ले सकती है अब टीम, और हर ओवर में यहाँ अब ये कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा बाउंड्रीज लगाई जाएं। अच्छी बॉलिंग मास खान की, रेहान अफरीदी ने उन्हें खबरदार किया इस बॉल से पहले कि आप नासिर के पैरों को देखते रहिए क्योंकि वो अटैक करेंगे। करने की कोशिश की नासिर ने, लेकिन तेज बॉल कर दिया माज ने। उठाया, क्लियर कर जाएंगे कवर पॉइंट को और 2 रन भी मिल जाएंगे। दौड़कर आपको बहुत रन यहाँ पर बनाने के मौके मिलते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। 120, 2 खिलाड़ी आउट। तिरपन रन पर नासिर नवाज, चैंपियनशिप की दूसरी इनिंग सेंचुरी है उनकी और करियर की भी। पहली इनिंग सेंचुरी में भी उन्होंने 40 गेंदों पर 50 का इंसा अबूर किया था। अभी भी 43 गेंदों पर 53 रन पे खेल रहे हैं। मुबस्सिर, रोहेल नज़ीर, सुहेल तनवीर बैटिंग करने के लिए आना है इन्होंने। ये एजाज अहमद और उनके साथ समी न्याजी और ये मसूद अनवर हैं जो रावलपिंडी के बड़े मशहूर बैट्समैन होते थे 70 और 80 की दहाई के। ये भी ओपनिंग बैट्समैन थे और बड़े कमाल खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने सहरोजा मैच खेला पिंडी क्लब ग्राउंड में 1982 में और सेंचुरी बनाई। मंसूर अख्तर के साथ पार्टनरशिप के बड़े चर्चे रहे थे। जेफ थॉमसन और ऑस्ट्रेलिया के दीगर फास्ट बॉलर्स के सामने
टेरी अल्डरमैन थे और जेफ थॉमसन, ब्रूस यार्डले बड़े मशहूर स्पिनर थे। वो किम ह्यूज की ऑस्ट्रेलियन टीम थी। मरहूम रॉडनी मार्श भी उस टीम का हिस्सा थे। काफी बड़ी टीम थी और काफी उनका नाम और चर्चा रहा उस सेंचुरी के बाद। या मंसूर अख्तर उसके बाद टेस्ट मैच खेले थे, और एजाज और जो ये इनके हमरा मसूद मौजूद हैं, तो ये मुश्तरक है इनमें कदर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दोनों उस अटैक को पसंद करते थे, ऑस्ट्रेलिया अटैक को दोनों। जी, एजाज ने जब अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही थी फैसलाबाद में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस दी एजाज की भी, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में। ये बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन किया, नासिर पहले ही बार कर गए थे। बेहतर बॉलर रंगे हैं अब्बास अफरीदी, आज शुरू में इनको विकेट मिल सकती थी नासिर नवाज की। एक और शानदार डिलीवरी, इस बार भी रफ्तार कम की। नासिर नवाज को पहले ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, अब लेग स्टंप के बाहर एक सेट बैट्समैन के खिलाफ ऐसी बॉलिंग करना ये उम्दा कारकर्दगी है। फिर रिसीव किया, और नॉर्दर्न की जो बैटिंग की जो स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे थे आखिरी 5 ओवर्स में, पिछले मैचेस में उमर अमीन और नासिर नवाज की काफी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन जो एक्सेलरेशन थी वो हमने नहीं देखी। तब भी उनके हाथ में थी और आज भी यही कहानी है अभी तक। द बॉलिंग, एक और गेंद जो बाउंड्री के बगैर गुजरी, बेचैनी बढ़ने लगती है कितने भी सेट हूं, क्योंकि ये देखिए स्ट्राइक रेट जो है इनका कम होने लगता है। क्या इसी तरह की सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि इन्होंने वो प्लॉट लूज किया था जब एक मैच में 169 से ये आगे नहीं जा सके थे। 82 रन नासिर ने बनाए थे, उमर अमीन भी इनके साथ देर तक खेलते रहे थे। और इसकी वजूहत आप इस ओवर में देख सकते हैं। बॉल के बाद बात करते हैं। ये देखिए, पहले नासिर नवाज ने 2 बॉलों पर चार्ज किया और बड़ी हिट मारने गए। फील्ड में काफी गैप हैं, और अगर यहाँ आप हर बॉल का इस्तेमाल करें और गैप में ऑन साइड पर, तो खैर बहुत बड़े बड़े गैप हैं। स्लोअर डिलीवरी आप पिक करके गैप में खेलें ऑन साइड में तो 2 रन मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चौके और छक्के ही लगाएं। इस ओवर में भी 3 गेंदें खाली गई और सिर्फ 2 सिंगल आए। इसी तरह स्ट्राइक रेट नीचे आता है, प्रेशर बिल्ड होता है और फिर उसी में गलती हो जाती है। और इस काम में जो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी हैं, खासतौर पर उनके जो कप्तान हैं, वो इस तरह की सूरत हाल को भांपने में वो उनको मलका है, क्योंकि ये टीम कम बैक करना जानती है, और एक बार अगर आप इनको मौका दे देंगे इस खेल में वापसी का तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, बहुत मुश्किल हो रहा है बैटिंग करना। यहाँ पर दूसरा रन भी नहीं ले सके, तो लगता है कि नॉर्दर्न की टीम जो है ये पटरी से ये उतरने लगी है। 122 पर 2। Nasir Nawaz has been superb. Yes, luck has been on his side, but he made sure he capitalized on that opportunity. Very calculated in initial time, but then he unleashed himself. Well-deserved 50 for him. Northern needed someone to click from the top order. Good position, Northern. 123 for 2 and 16. But really, if you ask me, the
the digits tell you it's a very comfortable position because you're only 2 wickets down. But what really matters is how much you get at the end of 20 in the score. You could have 8 wickets in hand or only 2 in hand. The score. So how many more can they add? And I have been laying emphasis on the fact that 160's got to be there in a knockout game. Shot. That'll be 4. Placement has been good today from the northern batters. No matter how many opportunities Nasir has got, he'll grab them with both hands. That's his comfort zone. Short of length, and look how deep he is. Just getting that extra push on the toes to elevate that, clearing that extra cover fielder. Whenever you will provide width, you will be punished. That's a given fact, especially to this guy who's already set on 50 odd runs, 58 to be precise. That's a good ball. They want to come back for 2. Good throw. Well, oh, he hasn't picked it up. Kamran Ghulam there. We don't really have that facility available here where you can actually tell where Nasir has been scoring in this innings mostly, but you can tell by if you've been watching the whole innings, it has been square of the wicket because he likes that shorter length. It's up to the KP analyst. If they have watched his innings against Central Punjab where he got 80 odd, the shorter ball did work for him, the fuller didn't. And they're offering him that shorter length. And he would have fancied this last night, Nasir Nawaz, knowing that Israr Ullah or Arshad Iqbal, they all hit the deck hard. So he's in the game. Especially in shorter formats, I do believe in doing your homework against the opposition, that man-to-man marking I always keep on talking about. Because you have a very limited time. An over or so can change the game so quickly. You cannot afford to be playing on the strengths of the opposition. You've given that opportunity to Nasir Nawaz today. That'll be 4 more. He's toying with the bowlers now. This time it's Zishan. They've got to keep the scoreboard in mind, KP. If they want control over it, they should now look to stop this run leakage rather than trying wickets. What will count in the end is runs. That's brute force. Just in the zone, it wasn't a bad delivery, you have to feel for it. But the execution was way better from Zishan. He came out with a bat with some serious intention to go big. And he's taking the attack back to KP from ball 1. Same region, same result. Yes, it is. Arshad Iqbal is running out of options at the moment. He bowls short to Nasir, he likes it. He bowls fuller to Zishan, who likes it. See, that's the problem. These are the deliveries you would want to bowl to Nasir, as you said. KP, they're struggling. 16 off this over, that's a big one. Just giving that extra momentum to Northern now. 17 gone, 139 for 2. "14 boundaries and 4 sixes in this innings. Previous over going for quite a few runs, 3 boundaries in that. So yeah, once again, that don't worry about taking wickets right now. Talk about defensive field, stop the runs as many as possible. They can be 150 for 2, but that will suit you as a side chasing. On a flip side, that's where Northern needs to keep on accelerating. They did lose one game the other night because they lagged in those middle orders.
17 overs gone, 139. That's ideal. They need to go an extra mile. Direct hit as the throw and a miss. I'm not sure that Khalid Usman hurried onto that ball as Ullah's previous over. It's good length, making them that hard length to pay for the northern bowlers. Keeps on rising because he's tall guy. You need to stay inside your crease to maneuver with that sort of a bounce. Well, I felt on the previous delivery it was a run-out opportunity. Khalid Usman was very late to react. So they've had their work cut out, Northern. They've scored only 11 of Ehsanullah's 3.2 overs, knowing that he's their spearhead. So they've scored against the others. And if you actually look at Nasir's innings, it's not like a brisk knock. It's 50 deliveries of 62. His power play was 20 of 15. And then he slowed down further between over 7 and 15. He scored 34 of 31. Someone who's batted for 18th over, it should be at least having a strike rate of 135 or something. But having said that, maybe he's been given that role after Umar Amin's dismissal, bat the 20 overs. Zishan can just go as he's going, 16 of 9. It's in the air, and the luck is also on his side. If he has a miss hit, there's no fielder there. Other day I remember having a conversation with you at what problems Northern were facing. And I said the need to identify two players with some role definition to just anchor the innings. I think Umar Amin had to be one, and Nasir now, it seems like he took the responsibility as an opener. Slight tension there, you can sense that in KP's dugout there. Talking about Ehsanullah and his spell of 4 overs at the moment, none for 14. He's got, he actually shares the best economy in a spell of 4 overs in a match with Amir Yamin, and that is 4. 4 is like an amazing economy rate for a fast bowler. You like at bowlers, you as a batter need to do your homework against the bowlers of your opposition. With Ehsanullah, we know that he's a tall guy. He will hit the hard deck and it will rise a little bit. So you cannot target him straight down the ground until you just pull away and play with the horizontal bat. You would like to hang on that back foot and play it squarer. So 4 overs and 16 runs, that'll be an economy of 4. If he can actually not give away 2 runs, he'll probably better that. At times it's not that you're facing a good, decent pace bowler. You have to go hard at him. Just be sensible about your options and utilize that pace. So batter at times you just need to put some bat on a very quick delivery and it travels and races into the boundaries. It's just the game awareness where you can capitalize being out there in the middle. Oh, superb. He finishes off with a brilliant over, just 5 of it. His economy gets even better, 3.5 in a spell of 4 overs, and he's covered up for the previous over, mind you. 144 for 2 after 18. Six ballers operated. Khyber Pakhtunkhwa. 2 getting success. Arslan Iqbal and Khalid Usman, the captain. Economy mostly
touching that turn. 10 runs, except for Sanullah, as we were talking. It's not easy to play against him, but again, just be ready where you can grab those runs, keep rating strike. If you cannot find a boundary option against a bowler. Oh my God. The captain just told Abbas Afridi what to bowl, and the batsman has played it over the captain Khalid Usman. He's been expensive today, Abbas Afridi. He's already gone for 33. Back of the hand, but the length. You need to have variations, but where you're pitching them is what matters the most. It gave him ample time to just bring that bat in, find the middle of it, and it sailed away over the boundary. Reaches 71 now, Nasir. $150 up for Northern. They're going strong. They need to finish strong. Abbas has to be very immaculate with his line length. He doesn't has possessed that extra zip in his pace. Full toss. He's lucky that's not been hit for a boundary. Did got away with that one. He's trying to pluck it. Could have maybe eyeing that area. 45 inside the circle, behind squares, the boundary option. Got 3 men patrolling the boundary on the leg side. Got long off and deep square. Is he going to just stay away and hit that offside? That's well done. Wrong end. Oh, the batsman were nowhere at that ball hit. Keeper had no time to come to the stumps. That's well done. There were a few chances for run-outs, and KP did miss them today. Throwing his bat. Oh, confusion there. At a moment, both were running towards the same end. Lucky they survived another opportunity. No one's in the frame. Shot should be out. Oh, he got it on the second attempt. That was hit hard. First reverse cup and then done well in the second attempt. It was Nasir who has to walk. Server takes the catch. That was traveling. My word, that was sizzling away. Server really had not much time to react. He got there, just crouched down, and finally on a rebound, he made no mistakes. He did put him down earlier, but this time he's redeemed himself. Brilliant innings from Nasir Nawaz, 72 of 55. Northern is well set on 52, 152 for 3. In the last, say around 11 deliveries, they've scored 12 runs and they've lost a wicket. It's not that bad in these overs. KP has only given 12 runs. It's just that 6 from Abbas. It's courtesy that brilliant over from Ihsanullah, the one before this. But mind you, there's one more over to go after this, and that would be Arshad Iqbal. Sohail Tanveer has been in good form. He's won himself a shared player of the match yesterday. One earlier in Pindi. It's wide. It was there to be hit. Nasir Nawaz did found the middle of the bat. Just that length, ideal length for him. Couldn't really get that elevation and distance. Straight to server. He was lucky to get his hands around in the second attempt. But he's played his role. Good innings from Nasir Nawaz.
Well done, slower one. You need pace on ball to play those ramp shots or those scoops. It's okay to be premeditated, but again, think about what sort of a bowler you're facing. He's going to stick to those slow ones, cutters. Need to have three options, at least three options for one delivery as a batter. He's got to bowl the last one. Well, it's the last ball of the over. It's in the air again. And server will come around. Will they get to? Yeah, they do. Still not a bad over. Started off with a 6. And then calmed things down. Got a wicket as well. 19 gone, 155 for 3. Last over Kawali, Khashabash. So last 6 deliveries left in the northern innings in the first semi-final. 155 for 3. Anything they can add from here on is bonus. I'd still tell you, this is a gettable score. I do agree. I think Northern just might have struggled to get those extra 20 runs around. They had a pretty good start, good foundation just around halfway mark, and KP has done well to pull some strings back. Good start to the over. The Northern scored 47 in their last 5 in the previous match, in which Nasir Nawaz scored 80 odd. When you have a batter who's batting down up to the 18th over with 80 runs to his name, you'd expect more runs in the last 5. But 47 it's pretty just touch and go. 5 overs is 30 deliveries. Here, they've scored 43 up till now. They can add more. Talking about the last 4.1 overs. Am I giving too much information? It's all valid. The reality of the ground. Beg your pardon, 36 up till now. Gone. Base of leg stump. This is what KP bowlers can do. I don't know, you'll stick to your basics as a batting unit. Try to play on the merit of the ball instead of just trying to swing. This was a tough delivery to play for any batter. But to score 36 in the last 4.2 overs, you need runs here. This is where you want to just expand, especially when you've got like 7 or 6 wickets in hand. It's last over. Oh, they're going to check the no ball, but it's like it's tight, but maybe he got away with it. He looks good. Important is where your foot lands, and Arshad's foot lands just inside, not where it ends. That doesn't matter. Our replay guy is having butterfingers. He's got to stop at the right point at this juncture. Just a little back, one more frame. It's got a tiny fraction of the boot behind the line. Yeah, so he's all okay. Legit delivery. Dishan, he's trying to get runs, and obviously you expect Yorkers. You need to craft something out of it. On this occasion, Arshad Iqbal was spot on. Gone on 19, Northern 156, 4 down. यही लगता मैं जी ठीक है थैंक यू
Good first two deliveries, single and a wicket. Mubassir on strike. Good ball again. Oh, that's just unlucky. That was a very good ball. That did not deserve a boundary. Not good fielding. Not at all. You know it's the last over. Mars on short third man. You're going to expect Yorkers from your fast bowler. And you need to be on your toes, especially on 45 and short third. That's why he's angry, the agony. You cannot justify that sort of effort in the field. Just gifted that boundary to Northern. They reach 160 now. 3 more deliveries to go. You just scared Joseph Raza. So loud. We're just looking at this pattern, how Northern has scored against CP and similar to the match today, KP. They ended up scoring 162 against Central Punjab and they lost that game, Northern. And they've scored the same way, power play 48, 46, at 10 overs mark 74, 77. That's the last way. The problem is that the last 5 overs, they've just not been able to accelerate enough. They scored 47 in the last 5 against Central Punjab, and today they are just around the same mark, 41 at the moment, with 2 balls to go. So in a nutshell, Marina, my point is that they couldn't save 162 when Nasir Nawaz scored 80 plus. That's why I've always been an advocate of bringing in your batters who can play an impactful innings. Yes, you would love to have your top order going deep into innings, scoring hundreds, but at least he or should know the art to change the tracks at the right time. Sardada Farhan is a brilliant example. He reached his second 50 in 21 deliveries. That shows that he accelerated at the right time, not compromising the team's total. If Arshad doesn't get hit for a boundary or a 6 on this last ball, I tell you, a bit of momentum will be with KP in the dressing room. He's asking for a caught behind and they've gone. He's just forgotten about the ball. They're giving away runs. This is not good cricket. In his appeal, he's just forgotten everything. The keeper has tried to run the non-striker out and given away 2 runs. 164 for 4 Northern at the end of 20. Again, 2 lucky runs. He was so adamant to get that wicket. They did well, Mubassir and Sohail. They ran for that last couple of runs. Reaching 164, they will have to bowl some disciplined lines and field really well, Northern, because KP has that sort of lineup where they can challenge. They've got batting on their side. They've got batters who are in form, and they'll be coming up with all chips in. It's a decent total. Will it be enough for Northern? Only time can tell that. That's how things unfolded. Nasir Nawaz, the opener, got 72 of 55. One solid foundation. Taimur Sultan managing to get 21. Umar Amin was playing a good hand, 32 of 26 deliveries. Ishan Malik with quick 19. Couldn't really extract runs they would have loved at the end. Sohail and Mubassir struggling. KP did well in last 5 overs. They managed to pull down things and contained Northern on 164. Yeah, apart from Ihsanullah, who gave away just 14 runs, I think they've scored in the remaining 16. The spinners are a touch expensive, but they still take it. 164 in a semi-final. It's even Stevens at innings break. Umar Amin, he won the toss and decided they'll put a target on for Khyber Pakhtunkhwa. No change in the playing 11, back in the same ones. The openers
Taimur and Nasir Nawaz came in. They were cautious in early moments, but this was the first drop. Dying on Sarwar. Runs kept on coming. They managed to put some accelerator down. Taimur started to get that momentum going. It was a big one right out of the blocks. Nasir Nawaz, yes, lucky on some occasions, but he did grab this opportunity. He went for big shots quite early. This was the demise. Arshad Iqbal with the first wicket. Taimur had to take the walk. So Umar Amin promoting himself with Nasir Nawaz. They did set a certain foundation where they could exploit the runs. A few glorious drives and some lapses in the field helped them to gain that momentum. That was crunched away from Umar. Nasir Nawaz, who picked his areas very carefully. Nasir kept going, and whenever he got the opportunity, he went for those big hits. Omar Amin, he's a class act when he gets going. He's taken the responsibility. That shot was good against Khalid Usman. Picks the length very quickly and gets runs. That's the important part. And he did go after the spinners, especially. This was the moment where he probably faltered by a few feet and was caught. Then Zishan didn't waste any time, along with Nasir. They hit a few in that one over from Arshad Iqbal. Went for 3 boundaries in that cover region. And after that, they started feeling the heart got bigger and they can get runs off the fast bowlers. It was good captaincy at this stage when they got Ahsanullah to bowl that 1 over, which hardly gave runs. This over of Abbas Afridi got the wicket of Nasir, and then Arshad Iqbal wrapping one up in the root of the leg stump. Some very ordinary fielding efforts, leaked runs on good deliveries, eventually 164 for 4 after 20 overs in the first semi-final. Northern winning the toss and deciding to bat first. So this is the target for Khalid Usman and men. We'll come back in a moment with Khyber Pakhtunkhwa's reply.
Cricket Stadium. Semi-finals day, Kingdom Valley National T20 Cup, Khyber Pakhtunkhwa versus Northern. Story of the day so far, bit of a mixed bag innings for Northern, but eventually they ended with 164 for 4. Another good knock from Nasir Nawaz, 72. Umar Amin made 32. Zishan Malik was looking good, but in that second half, that acceleration that Northern would have been hoping for after a platform, that didn't come. The star man once again was Ehsanullah. Look at those figures, 4 overs, none for 14, no wickets for him. He troubled all the batters with his pace and bounce. Wickets for Arshad Iqbal, Abbas Afridi and skipper Khalid Usman. 14 extras as well, quite a lot. The pressure game, semi-final, knockout stage. KP have all to play for. 165 is their target. Northern have got runs on the board, and that's what Umar Amin wanted when he wanted to bat first. Spring in their stride. It is not a bad total at all, I can tell you that. This wicket has a little indifferent bounce. 165 will mean that Khyber Pakhtunkhwa would have to bat really well. The batting lineup mostly is under pressure. Two men to look forward to will be Kamran Ghulam and Sabzada Farhan once again for Khyber Pakhtunkhwa. But that northern body language will suggest that they're pretty confident to defend this. Remember, this is Northern's 4th game in a trot. But they were pretty vibrant. They took the field very quickly, waiting for the Khyber Pakhtunkhwa batters to come to the middle. Sabzada Farhan leading the way. Rehan Afridi, who played quite neatly yesterday, will be the opening pair. What do you make of this first innings of Northern, Sikandar? Do you think they've got enough? Well, it's not a bad score for a semi-final. They could have got more. Getting less than 50 in the last 5 is with 8 wickets in hand at the 15th over mark. Yeah, that I feel that they probably could have done better. But that's fine. They've got plenty of bowling. Zaman, if he can bowl how he bowled yesterday. Chinwari supports Sohail Tanveer. And the big 4 overs from Mehran Mumtaz. And I'll tell you what, if KP attacks Mehran, that will worry. If the front-line bowler gets hit, then Umar Amin will have to start thinking, where else does he go? So it's a very balanced game. 165 to win. It's not going to be easy, but it's not something that's not gettable. Sahibzada Farhan's start will matter a lot. His 100+ runs yesterday are going to be very crucial. That form is required today. So all the games that you've played before this are gone down of the window. What you do today is matters. Sohail Tanveer off the mark and straight away with good areas outside the off stump. Sabzada Farhan is the man in form from last night. For a magnificent 100. Good against spin, front and back foot. Had fair share of luck along the way. Mostly against spin until he took care of Junaid Khan. Need another good knock here. KP looking up to him. Provide them with a good foundation. Crunched nicely, but straight to the fielder.
Sikandar, we've seen so many close games in this tournament, but still we haven't seen a super over. And that's the only thing missing, because we had tight finishes. This score is also not a huge score. At the halfway stage, I think both the teams will be pretty confident. Do you think we're going to see a super over today? It's a bit too early to ask. What's the gut feeling? I don't mind super overs. They're fun. But you know, only disadvantage is what you've done all day, it doesn't matter anymore. That's erased. And a super over is sheer luck. Your averages, everything just is down the flush. It's about that particular over, who absorbs pressure. It's like that sudden death in football. The whole game, the technique, the passing, nothing matters. That's a wide, and a run start to minus from the total. The reason I asked you this, Sikandar, because I have a feeling, like, just carrying on, we had so many tight games. Either one of the teams will just run out of steam today, or it's just going to go all down to the wire. It's Sabzada Farhan against Northern Bowling. He's got the better of Mehran Mumtaz, and that's the key battle you were talking about, Sikandar. 176 the strike rate without being dismissed. But if you want a super over, then KP has to score 46 in the power play, 77 when they reach 10 overs. They need to score 120 when they reach 15, and then score 44 in the last 5. They'll end up with exactly the same score. So keep an eye. Yeah. You'll see that matching of the scores at the end of 20 overs is hard enough. You give them 4 thresholds and all of them have to be the same score. I don't think this is going to happen. This is going to ever happen. I'm not sure. But yeah, that's a good one. Good shot. He chips it over mid-on and gets a 4. A little too full on that occasion, Sohail Tanveer. First boundary from KP. Rehan Afridi was instrumental in the good start last night as well. He took all the pressure on himself, and today as well. That little flick of the wrist. And he didn't try to hit it hard. Just that little chip, enough to get it over the infield. He knew it all along. He hit it good enough for a boundary. Good start, KP. Charge. What a shot of authority. Straight over the bowler's head. Bang into the side screen. That was dismissive. Previous one was just a chip. Look at that. This is pure power. He's a little man. He does pack a punch. Wait into the shot. Give him the momentum. And this is the safest place to hit. Right into the side screen. 12 for none after 1. Well, Mehran Mumtaz is into the attack quite early today. He bowled outside the power play yesterday, but now he's been given the responsibility, and the key battle with Sabzada Farhan will resume here. So far,
Sabzada Farhan has got the better of him. Today's a different day. I'm not really sure. Is this a reaction change from the captain, Umar Amin? Bringing him on straight away after that 12-run first over. KP is a different bull to deal with. Nice drift. I was talking to Mehran last night. He said in Rawalpindi he didn't get much turn, so he was coming straight through. But here he finds there is a little turn, so he's decided to change the angle. This is his wickets from last night. Sensational over. But the change that he's made since Rawalpindi, he's coming between the umpires and the stumps, creating that angle. Yeah, it's a no ball. Even if he would have caught it, that wouldn't mean anything. It's a free hit. I have a feeling they will attack Mehran Mumtaz. KP won't back out. That's a big no ball. Can't change the field now. It's the same striker. He seemed a very thinking cricketer. He's really trying to assess the conditions, and like I said, here he thinks that he can bowl slower and he'll get more grip, and that's been the reason of his success in this Multan leg. Crucial spell once again. Got a long one and deep square leg in position for Mehran. Putting a lot onto the ball. You could see the ball still getting a drift. Very classical left arm thing. And that drift means that he's imparting a lot of effort on the ball. They can come back for two. They can. One more ball in the over. They've extracted 5 already. That's good running. Run the first one hard. So you're in a good position to complete the second, and with ease. You can do that here. It's a huge outfield. Good over. 5 from it. It's 17 for no loss. Imran Khan Senior didn't get a game. He's been rested for the last 2. There's Abdur Rahman, the coach. Next to him, Arshad Iqbal. Sohail Tanveer continues and starts with a boundary. I think Rehan Afridi has made up his mind that he is going to go after Sohail Tanveer. He's going to try and rattle his mind with a lot of movement in the box. I think he's got the license. Ever since he's come in the team, he's been given that role. Not much of a room, but Rehan Afridi is really putting him off with his movements. Good proactive batting. There's a lot of change of field happening. Still, third man is still up in the ring. Those 2 fielders behind square on the offside. Short third and backward point.
Yeah, third man still up, but the fielder's changed. It's Mehran Mumtaz now. Earlier it was Salman. Good slow ball. It's a very tricky position. Third man fine leg. The ball comes to you very quickly and it just appears to you halfway through that shot, because you're facing the back of the batter. So Tanveer has really tightened up his length after that first boundary. Really a game of cat and mouse here. Sohail Tanveer's experience. Then this man's intent. It's a great contest. Yeah, asking for something, but if it has not touched anything, it should be a wide. And if you see Sohail Tanveer closely, he joined in the appeal quite late, because Rohail Nazir started jumping up and down. Look at Sohail Tanveer. At first he wasn't interested. Look at him. And if it didn't hit anything, should have been a wide. Shoza Braza is being called upon quite a few times today. Yeah, it shows the brother maybe feels that that one was very close to that leg stump, probably just over it. Bringing all his experience into play, Sohail Tanveer, after being hit for a boundary and a 6 in the first over. Starting with the boundary, 4 dots now. It looks like a band, the local band. Where's the dhol? They got all the uniform and all. Don't see the dhol. The atmosphere is building here. The sun is setting down. People have started to pour in. Very soon we are about to give you some good news if you're planning to come here and watch the national T20 games. So don't go away. It's for the people who want to come and watch the match. Something exciting. It's in the air, but it's going to go high between the two fielders. And it's been picked up by, I think, Mubassir, if I'm not wrong. That's Zaman. The batters have come back for 2. Third umpire wants to have a second look. Excellent work from Zaman Khan. He had to balance himself, just going around the curve to make sure that he doesn't step outside. Tiptoes, twinkle toes, Oh, maybe. I'm not sure. I'm not sure. The first and the second step after grabbing the ball. This one is still okay. This step, this I might give away. That's fine. This one looks very close to that boundary, skirting this. Does he brush anything? Wow, that's just touch and go. No movement on that skirting though. Just like a ballet dancer, he weaved his way. The umpire still waiting. He might have the option to push the ball back to the oncoming Salman Irshad, but he decided to keep hold of the ball.
This step is fine. This step is what the umpire wants to be sure of. Is he brushing any part of that boundary skirting? Is it conclusive? I'd say give it 4. I'd say give the benefit of the doubt to the fielder. No boundary. It's harsh. KP's working hard to get those runs going. Good effort from Zaman. He's running into the rope and then changing course. Mehran gets another over. Surprising, I thought it only one. So the new ball is being shared between him and Sohail Tanveer. Really surprising because it's making him push the ball through. But his strength was, which we saw last night and in previous games, where he gives it a good loop and gets turn and bounce. Can he take that chance inside the power play with field up? Wasn't really in control of the shot, but found the gap there. Don't know what the hesitation was. Of always 2 runs, eventually completing them. I think when dancing down the wicket, he just felt that the ball was a little away from him. That's why he couldn't control the shot. Way and slower. Excellent flight delivery. Oh, how did that miss the stumps? How did that miss the stumps? As the bounce that has saved Rehan Afridi. Wow, that one turned with pace. Look at that, the trajectory. He pushed it through, but still imparted plenty of revs on the ball. It did grip and beat the outside edge and the stumps. Out again. Direct hit would be trouble. And Rehan makes it. Got to take those chances. He had all 3 stumps to aim at Shanwari. The good thing was there was no hesitation between the batters. And if you do that more often than not, it's a safe run. Catch it is a call and goes over. That's the gamble you take as a fielding captain, and sometimes you end up paying for it. Sabzada Farhan continue to dominate Mehran Mumtaz. I wonder if Northern checked those matchups between Farhan and Mehran Mumtaz. Good strike down the ground. Mubassir was interested for a minute, but way over his head and over the fence. Two is the call. I think he's hit it too well. Single to end the over. 11 off it. 34 for no loss. रेहान आफरीदी ये छुपे रुस्तों में साबित हुए। कल भी इन्होंने सारा दबाव हटा लिया था, साबजादा फरहान को मोहलत मिल गई थी सेट होने की, और आज भी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है। आज दिन की गर्मी अब कतरे कम होने लगी है और सलमान को बॉलिंग करने के लिए लाया गया है। सलमान इरशाद को 2 ओवर स्पिनर्स से पहले ही करा लिए गए और सोहेल तनवीर से 2 ओवर कराए गए पवेलियन से, लेकिन वो खासे महंगे साबित हुए। लेकिन ये बहुत उम्दा इब्तिदा है खैबर पख्तूनख्वा की, नॉर्दर्न से मिलती जुलती है। अगर 4 ओवर से बाद हम देखें, कभी कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और इतने ही रन से हवा में, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बाएं तरफ निकल गए थे सलमान इरशाद, इसलिए मौका नहीं था।
यहाँ चांसेस क्रिएट हुए हैं केपी के लिए, लेकिन मिस्टर डिपेंडेबल साहबजादा फरहान मौजूद हैं क्रीज पे, और उसकी मेन वजह यह है कि रेहान ने उन पर प्रेशर, जैसे आपने कहा, नहीं डलने दिया है। एक और लेंथ डिलीवरी जिसे ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, शायद पेस को एडजस्ट नहीं कर पाए। 130 रन का सफर अभी मजीद करना है केपी को इस मैच जीतने के लिए। उठाकर खेला और मिड ऑन के ऊपर से हाथ साफ कर लिया और ये 4 रन मिली। कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया उस्मान शिनवारी ने, लेकिन बाउंड्री नहीं बचा सके। यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल शॉट नहीं था ये रेहान अफरीदी की जानिब से, लेकिन रन आने चाहिए जैसे भी आए। फील्डर मिड ऑन का सर्कल के अंदर था और उसे क्लियर किया आसानी से, और अच्छी एफर्ट उस्मान शिनवारी की जानिब से। रोल जो है बड़ा वाज़े दे दिया गया है रेहान अफरीदी को कि उनने जाकर चोटी के ऊपर से शॉट खेलने हैं, घबराना नहीं है। हवा में शॉट खेलने से इनको इससे पहले फर्स्ट क्लास विकेट कीपर बैट्समैन समझा जाता था और इनको तकरीबन मुख्तस कर दिया गया था कायदे-आज़म ट्रॉफी के लिए ही। और T20 में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस ज़्यादातर नज़र आते रहे। अच्छा कट शॉट, एक और चौका, दिलकश तरीके से खेला, इंतजार किया और रफ्तार को इस्तेमाल में लाए। ये शानदार गेम अवेयरनेस है। उनको मालूम था कि फील्डर जो थर्ड का है वो सर्कल के अंदर है, पेस को यूज किया शानदार तरीके से, प्लेसमेंट कमाल की रही। बहुत ही शानदार साथ निभाते हुए यहाँ पे रेहान अफरीदी, और शायद इसी चीज की कमी केपी की टीम में थी कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था। उसको आज फिल किया है रेहान अफरीदी ने, आज भी और कल वाले मैच में भी, और रिजल्ट आपके सामने। बहुत ज्यादा रन नहीं है, और अगर ये पावर प्ले इनके खिलाफ निकल गया उमर अमीन के, तो फिर मुश्किलात हो जाएंगी। आखिरी 5 ओवर्स में पहली इनिंग्स के जो मोमेंटम था वो केपी की तरफ चला गया था, और अभी वो मोमेंटम केपी के साथ ही है। अक्सर कहा जाता है कि T20 के इनिंग्स का जो आखिरी एक चौथाई होता है, यहाँ रवानी हाँ जिस टीम के साथ हो जाए। ये किंगडम वैली नेशनल T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल्स में लकी ड्रॉ के जरिए मोटर बाइक्स जीतने का मौका है, और शर्त यह है कि आपको स्टेडियम आना है, टिकट खरीदना है, आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए और इस बाइक पे बैठ के आप भी घर जा सकते हैं वापस। एक और शानदार शॉट, इस बार ये क्रिकेटिंग शॉट साहबजादा फरहान थे जिन्होंने बॉलर की चोटी के ऊपर से खेला। फिलहाल यहाँ तो केपी का पूरा मूड है कि नॉर्दर्न को घर भेजा जाए। जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं साहबजादा फरहान और रेहान, बहुत ही शानदार है। देखिए वेट किया बॉल का, लॉफ्ट कर दिया, ऑन दी अप खेले, अच्छा तरीका है। बॉल उनके जोन में थी, अच्छी शानदार फॉर्म में नजर आए हमें साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में। केपी डिपेंड करती है इनके ऊपर, और इस शॉट से ये भी निशानदेही होती है कि ये पिच बैटिंग करने के लिए कितनी आसान है। तो मौका गंवाया है नॉर्दर्न ने 180-185 तक पहुंचने का। फुल टॉस को मोड़ दिया, खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखने में आया जिसके नतीजे में 2 रन और पाए साहबजादा फरहान ने। 50 रन यहाँ पर मुकम्मल हुए और साथ साथ 5 ओवर्स भी केपी की इनिंग्स से। अच्छी पार्टनरशिप रही है साहबजादा फरहान और रेहान अफरीदी के दरमियान। 19 रन पर मौजूद हैं साहबजादा फरहान, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट किया है रेहान अफरीदी ने। 29 रन 19 बॉलों पे, और ऐसे ही 7 की ज़रूरत थी साहबजादा फरहान को दूसरे एंड पे, जो केपी को शायद जब से रेहान अफरीदी आए वो मिलना शुरू हो गया। तो एक अच्छी पार्टनरशिप एक अच्छे टाइम पे, रन रेट जो है वो 10 की है। यार
सलाह मशवरे मैदान में जारी हैं। उमर अमीन इस वक्त ज़्यादा परेशान कप्तान दिखाई देते हैं। जमान खान एक ओवर ये क्या करते हैं, अक्सर देखा गया पावर प्ले के आसपास, और पहला ओवर जो है अक्सर इनका डबल फिगर में जाता है। ये डेथ ओवर्स के ज़्यादा चैंपियन बॉलर हैं, नई गेंद पर अभी उतने कारगर हैं नहीं। या ये भी सलमान इरशाद भी कोशिश करते हैं कि पुराना बॉल हो जाए, रिवर्स का चांस लेते हैं। शायद आज इसी वजह से मेहरान को पहले ओवर करवाए गए। ये अच्छा बाउंसर है, तेज बाउंसर है, बहुत ही शानदार बाउंसर है ये। शायद सीखते हुए तो थोड़ा केबी के बॉलर से शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन जो इनका एक्शन है ये थोड़ा मुख्तलिफ है केपी के बॉलर से। जमान का भी, इरशाद का भी, ये स्लिंगी हैं, इसलिए इनको एफर्ट थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है शॉर्ट पिच डिलीवरी के लिए। हालांकि ये भी एक ज़माने में केपी के ही बासी रहे, वहीं इन्होंने आंख खोली है उसी इलाके में, बाद में ये कश्मीर पहुंच गए। लेकिन एक फ़र्क है कि केपी के बॉलर्स की निस्बत इनका कद छोटा है, गेंद वाइड हो गई उसी स्लिंगी एक्शन की वजह से ही। या इसीलिए ये जमान खान, सलमान इरशाद ये रिवर्स स्विंग के लिए ज़्यादा करामत है रादर देन शॉर्ट पिच डिलीवरीज के, क्योंकि एक्शन इनका सूट करता है। और यही वजह है कि जैसे आप आगे कह रहे थे कि ज़्यादा ओवर्स जो हैं ये डेथ में करते हैं, ये भी सलमान इरशाद भी। उस्मान खान शनवारी ऐसे बॉलर हैं जो शायद उनका हायम एक्शन तो है, लेकिन उनका भी कद इतना लंबा नहीं है, पेस इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसे ग्लांस कर दिया, एक कमाल खेला फाइन लेग की जानिब, फील्डर दायरे के अंदर थे और गेंद उनके और विकेट कीपर के दरमियान से निकल गई। रेहान अफरीदी ये विकेटों के अकब में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं, यहाँ सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। जब आपका विकेट कीपर बैटर अच्छे टच में होता है तो वो बैलेंस बहुत शानदार हो जाता है टीम में। और यहाँ पे यही रेहान अफरीदी का रोल है कि जाइए साहिबजादा फरहान जब तक मौजूद है अपने स्ट्रोक्स के लिए अच्छा आगाज फराहम कीजिए टीम को। आहिद सकीन की कटर किया जमान खान ने, बहुत ही शानदार स्पेल था आज खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एहसानुल्लाह का। इनका जो बॉलिंग करने का अंदाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका हाथ अंपायर के सामने से आता है, अब देखिए अंपायर के दाएं हाथ के सामने पहुंच जाता है, इनका हाथ इसलिए मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए पिक करना इस सेक्शन को। हासिल किया लासित मलिंगा से भी इस दौर के जो फास्ट बॉलर हैं वो कितने मुतासिर हैं। वसीम अकरम वकार यूनुस से बॉलर हमने बहुत मुतासिर देखे हैं, और ये एहसानुल्लाह हैं। इस मैच में उन्होंने 5 पलट के रख दिया, आपने 3 स्पेल किए, पहले स्पेल में सिर्फ 6 रन दिए अपने 2 ओवर्स में, पेस बाउंस, और ये गेंद को अपने विपी एक्शन की वजह से इन स्विंग करते हुए भी नजर आए। जब रिवर्स स्विंग करना एहसानुल्लाह को आ जाएगी तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आगे चलकर। यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हाई आर्म एक्शन है, हिट द हेड हार्ड करते हैं, डेको हार्ड हिट करते हैं, तो इस वजह से शायद उस तरीके से करामत नहीं होंगे। रिवर्स स्विंग की अगर हम बात करें, अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें तो साहिबजादा फरहान टॉप पे हैं। 1000 रन्स इस नेशनल T20 में उन्होंने पूरे किए अपने 2019 से लेके। अगर अभी तक बात करें काफ़ी टैलेंटेड बैटर्स इस लिस्ट में, लेकिन टॉप कर रहे हैं साहिबजादा फरहान। एवरेज शानदार है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, 6 बार 50+ रन्स कर चुके हैं, ये अच्छा रिकॉर्ड है। जल्दी करनी पड़ी, अर्जेंसी दिखा रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी, और अपने बैकफुट पर किया हुआ है इस वक्त नॉर्दर्न को। रेहान और फरहान ने 57 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। ये अच्छा पावर प्ले रहा है केपी के लिए, और इसका मेन वजह रही है कि रेहान अफरीदी ने आते ही अटैक किया है, क्योंकि रन चेस करने जाएंगे और उसके साथ अच्छे तरीके से निभाया साहिबजादा फरहान ने। जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इस तरह की टच में हो तो बहुत ही शानदार बात है ये।
साहबजादा फरहान 1000 रन मुकम्मल करने के बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया है और ये पार्टनरशिप अब पहुंच गई 57 रन पर। या दिल मोहली हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बैटिंग से। दोनों जो हैं 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और अक्सर और बेशतर जो टीम पावर प्ले जीत जाती है, बैटिंग पावर प्ले, वही मैच भी जीत जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की टीम इस वक्त आगे है इस मामले में और इनको अच्छा खासा तजुर्बा भी है बड़े मैचेस जीतने का। नॉकआउट मैचेस की ये बड़ी टीम समझी जाती है। इस इनिंग्स में पहले ही 6 चौके और 2 छक्के लग चुके हैं, इसलिए 7.7 की शरह से अब इनको रन बनाना है आगे चलकर। लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक एंड से इनको अब बॉलिंग करानी होगी क्योंकि विकेट लिए बगैर इस मैच में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे। उस्मान शिनवारी जिन्होंने कल आखिरी ओवर किया था और अपनी टीम को जितवा दिया था सदर्न पंजाब के खिलाफ। अभी तो कंडीशंस बहुत आसान हो गई हैं बैटिंग करने के लिए, अपनी मर्जी से रन्स कर रहे हैं दोनों, साहबजादा फरहान और रेहान। बॉलिंग में भी ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है और शायद जैसे आपने कहा वो अच्छा तरीका हो कि आप एक एंड से मेहरान मुमताज़ को लेके आइए, मुबस्सिर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं। कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा इस विकेट हासिल करने के लिए और बिलीव रखना होगा कि एक विकेट 2 भी ला सकती है, 3 भी ला सकती है। जैसे कल हुआ था, एक टाइम पे सर्दन बहुत आराम से मैच जीत रहा था लेकिन एक विकेट आउट हुआ, 2-3 विकेट्स इकट्ठे गिर गए और प्रेशर चेजिंग साइड पे आ गया। यहाँ पे ऐसा हो सकता है केपी के। एक बार फिर गैप में खेला, यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ बनने चाहिए। मेहरान मुमताज से जिन्होंने अपनी टीम को कल ये फतह कर साबित हुए, 3 विकेटें हासिल। की हैट्रिक पर भी गए और बड़ा इलाज। जवाब इनकी जानिब से स्पेल देखने को मिला था और यहाँ अंपायर शायद शॉर्ट रन देखना चाहते हैं ज्यादा। बैटिंग एंड पर जो साहबजादा फरहान थे वो जल्दी में थे वापस मुड़ने में। बैटिंग एंड पर देखा जाएगा ये शॉर्ट रन था या नहीं। सिर्फ अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी कैप्टनसी के मशवरा इससे भी बहुत मदद हासिल की है यंग कैप्टन को। तो डेफिनेटली ये नेशनल T20 का बेहतरीन रहा है हर तरह से अगर हम बात करें। जी हाँ, और इसमें सिर्फ एक फ़र्क देखने को मिला है कि स्पिनर्स का किरदार ज़्यादा रहा है। यहाँ 39% जो ओवर्स हैं वो स्पिनर्स ने किए हैं। मुल्तान में ये रेशो ज़ाहिर कि ज़्यादा थी, टीमें 2-2 स्पिनर्स के साथ खेलती हुई नज़र आई। और जो 2021 का नेशनल T20 कप था जो रावलपिंडी और लाहौर में खेला गया था, उसमें 29% ओवर्स स्पिनर्स ने किए थे। तमाशाई
इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ आते हैं, ये भी शाबाश के हकदार हैं। जहाँ शायद सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने वेलकम किया है क्रिकेट को मुल्तान में। फैमिलीज़ बहुत आई हैं, ये सबसे खुशाइन बात है कि फैमिलीज़ बहुत मैचेस देखने के लिए आई हैं। और आज भी अच्छा, और जैसे जैसे रात का वक्त आएगा क्राउड और बढ़ता चला जाएगा। शॉर्ट गेंद, 4 रन्स, निहायत उम्दा तरीके से गेंद की लाइन को कवर करने में कामयाब हुए और उसके बाद डिफ्लेक्ट कर दिया रेहान आफरीदी ने किसी तरह की दिक्कत के बगैर। ये आसान शॉट था, क्योंकि फील्डर जो फाइन लेग है वो सर्कल के अंदर है, और अगर आप इस लाइन पे बॉल करेंगे तो सिर्फ बल्ला ही लगाना है, और रेहान आफरीदी जितने अच्छे टच में है वो मिस नहीं करेंगे। 7 ओवर्स के बाद 66 बगैर किसी नुकसान के केपी। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो खासे महंगे साबित हुए हैं। महरान मुमताज से एक बार फिर उम्मीदें वाबस्ता होंगी, जिनको लाया जा रहा है इस वक्त वकार यूनुसेंट से बॉलिंग करने के लिए। अभी ये नए नए उभर कर सामने आ रहे हैं, अंडर 19 क्रिकेट से आए हैं महरान मुमताज, और ये एक रोशन सितारा बनकर चमक सकते हैं पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट पर। इतना अच्छा बॉलिंग एक्शन है, अपनी फ्लाइट को और अपनी पेस को वेरी करते हैं। जी हाँ, बॉलिंग के अलावा दिल भी बड़ा है इनका, घबराते नहीं है। प्रेशर सिचुएशंस में हमने देखा है इनको बॉलिंग करते हुए, सर्कल में भी बॉलिंग करते हैं, और जिस तरीके से कल इन्होंने बॉलिंग की थी पूरा मैच ही चेंज कर दिया था इनको एक ओवर ने, तो बहुत शानदार प्रोस्पेक्ट हैं ये। हाँ, लेकिन इस बार वार किया, ये जोरदार, ये छक्का। साहबजादा फरहान, जब इनके बल्ले से गेंद निकलती है तो फिर वो किसी के लिए नहीं रुकती। यहाँ साहबजादा फरहान जैसे प्लेयर को आप इस तरीके से फ्लाइट वाला बॉल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही शानदार फॉर्म में है। जब आप यहाँ बॉल करेंगे तो ये 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो 6 रन के लिए जाएगा। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा रूम दिया अपने आप को, और फोर्स पावर बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल की, और रिजल्ट भी शानदार रहा। ये अच्छा साइट नहीं है केपी के लिए, साहबजादा फरहान हमें लेटे हुए नजर आ रहे हैं। शायद फिटनेस का कोई इशू है, जैसे हम कह रहे थे कि बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी रही है मुल्तान में, आसान कंडीशंस नहीं रही हैं। इस छक्के, ऐसा छक्का मारने के बाद तो वैसे ही आपको खुश हो जाना चाहिए। यहाँ ये जाहिद फजल की याद आ गई, वो शारजा में जिस तरह वो भारत के खिलाफ इनिंग्स खेल रहे थे और बाउंड्रीज लगा रहे थे, और उसके बाद वो बार बार लेट जाते थे मैदान पर जाहिद फजल, और फिर नर्वस 90s में थे तो अपनी इनिंग्स छोड़कर चले गए। 98 रन पर बैटिंग कर रहे थे और इनिंग्स अधूरी छोड़कर भारत जैसी टीम के खिलाफ पाक भारत मैच में मैदान से बाहर चले गए। देखिए, सेहत से आगे तो कुछ भी नहीं है, अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। लेकिन यहाँ पे साहबजादा फरहान का क्रीज पे रहना जरूरी है, काफी फिट हैं, एंटरटेन कर रहे हैं क्राउड को, बच्चे देखने आए हैं उनको, बड़े प्लेयर हैं, जब तक वो क्रीज पे रहेंगे एंटरटेनमेंट हमें मिलती रहेगी। यहाँ कहा जाता है कि मुल्तान 4 चीज़ें जो हैं वो हैं पहचान मुल्तान की, गर्द गदा, गर्मा, गोरिस्तान, और ये सराइकी रक्स है आपके सामने, ये झूमर यहाँ पर डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। 4 चांद से लग गए हैं इस सेमीफाइनल को, इनकी मौजूदगी से भी चीयर लीडर्स हैं।
जी हाँ, देसी चीयर लीडर्स आप कह सकते हैं। 91 रन 76 बॉलों पे केपी को बनाने हैं। अंदर रहेगा। ये अच्छी बॉलिंग है, इस बार ड्रिफ्ट नजर आई और यही इनका खासा है। यही चीज जो है आगे चलकर जूं जूं ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे और लंबे लंबे स्पेल करेंगे तो ये फायदेमंद होगी नॉर्दर्न की टीम के लिए भी। ये जरूर कामयाब हो सकते हैं अगर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। हैरान मुमताज। हाँ, क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन बहुत आसान है, इसलिए अपने वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, बेसिक बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लंबी क्रिकेट खेलेंगे, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, उतना आर्ट बेहतर होता चला जाएगा, निखार आता जाएगा इनकी बॉलिंग में। लेकिन ये तो हमें देख लिया है कि पोटेंशियल तो है। और एक फर्स्ट क्लास मैच जो है इन्होंने पहले ही खेला हुआ है, उसमें 7 विकेटें इन्होंने ली थी। महरान ने बलूचिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स में 4, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की। और साहबजादा फरहान दूसरी जानिब ये बहुत ही, जब ये शॉट्स खेलते हैं तो दिल मोह लेते हैं। वो स्टाइलिश बैट्समैन है, स्टाइलिश, ये अच्छे एक्शन के हामिल बॉलर हैं। या मुल्तान में 8 ओवर्स के बाद 77। Cruise control on for KP, 77 without loss. After 8 overs, they're all well settled in. And that's the reason. Sahibzada Farhan, the ace player for Khyber Pakhtunkhwa's batting lineup, is the highest run scorer of Kingdom Valley National T20, 418. Highest 102, and look at that average, 41.8. He's got a decent strike rate as well. He's the key, has been the key for KP, setting a target or chasing one down like this one. I like the planning from KP. Though we've seen 100 from Farhan yesterday, but it's Rehan Afridi who's taken the initiative of going with the attack. 42 of 28. From the very first over, he went after Sohail Tanveer. Now Farhan. The running has been good, and they've kept that run rate hovering around 9.5, 10. So that even if there is a mishap somewhere, they lose 2-3 wickets in terms of runs, they're closer to the deliveries left. That's sheer planning. I'll bring in your experience, Marina. I'm not sure. 1 over from Mehran, the second over. I thought it would be that 1 over chance that Umar Amin will take, but he gave him another one in the power play. He's using the new ball up, so he's asking Zaman and Shinwari to bowl the older one. And nobody's getting the stumps these days. And I had a very strong feeling after watching last night's game, KP will not allow Mehran to command things. They will go after him, and he's young. They want to test him. If we hit him for runs, how does he react? Giving him first over was a good option just to buy that wicket. If they could dent KP early, that's understandable. But the second, that was, I feel, a total waste, because his strength has been just looping the ball, not just going hard. Runs. At least 2. So yeah, I don't think giving him another over, especially he has been the trump card for Northern, was a good option there. I think they actually did miss the plot. Could have been very effective in this middle over phase, where he could have just allowed him a little bit of air. He's got the field, he's got the protection, can buy those wickets.
And Mehran Mumtaz bowled 3 overs, none for 27. So what the KPM managed is, without losing a wicket, they've seen 3 of his overs off. Now the fast bowlers, Shinwari, Suhail and Zaman, will have to bowl really well, and Salman Irshad. And pace is not a problem for KP. They've been handling it well. They actually put pressure back on Northern by attacking their top bowler. The running is really good, and they'll go for another one here. No, they don't want to. It's ricocheted from the stumps, not off the bat. Why wouldn't you run? That's very strange. Explain this to me. I wish I could, because that's a genuine run. That's a fair call if you go for it. It's not your fault. The fielder always have to target the stumps, and if it does ricochet. I think what has happened is the ball has hit the stumps and then the non-striker. Because that's what Zaman was pointing at. Dot ball to end the over. 5 of it, 82 for no loss. Starting on the 20th, Pakistan versus England, 7 T20s, and the first T20. Buy those tickets, please, because the money that will be earned out of the ticket sales will go straight to the flood affectees. So go ahead and buy your ticket right at the bottom of the screen. You know where to go, pcb.bookme.pk. It's not just watching a great game of T20, but also that money going to the victims of the floods recently in Pakistan. Shorter length, just a single. We'll try and have a look at that run-out attempt, and then no overthrow run taken. Did the ball ricochet from the stumps only, or did it brush the non-striker at any stage? If it did, then it's good. You don't run. This is the throw coming in. It's the stumps. I can't tell from here. It's behind us. So, really, this is the... Look at Zaman. He's suggesting that the ball has come off Sahibzada Farhan. Oh, he wants 2. What's wrong with him? There's no 2 here. Now they can go for it, but the overthrow is too late. It's always 2-2 call from Rehan Afridi, but Farhan was never into the mood of coming back to the non-strikers. He's running for everything. He won the strike back. And look at there. He wasn't watching the ball. His back was where the ball was. That's why he couldn't really understand or comprehend that the fielder has already just grabbed the ball and is about to throw. That's not a good technique. You need to keep your face where the ball is traveling so that you can judge the call better. Another problem Umar Amin is having on hand is Salman Irshad's remaining 3 overs. He was hit for 16 in his first over. So basically, as soon as a wicket falls, he'll bring in Salman. Now he's waiting for that wicket. But sooner or later, he'll run out of that option as well.
Because you got to have someone to bowl the death overs. He can't just drain all the overs out of Shinwari and Zaman. But it's one thing to have options, but what matters is how you utilize them to get the result you want. And I think Umar Amin has missed the trick with Mehran here. He went too early for him. Got deep mid wicket inside the circle now, and 45 goes back to the boundary. They'll beat backward point. Just opening the face on a full toss. Easy to. I think all the different tricks that Umar Amin is trying to apply, they're being neutralized by some good running and then getting those odd boundaries going. You need to understand what opposition's strengths are and where your bowling options lie. You cannot just go to an opposition with your trump card at any stage because you think that he might buy you wickets. You need to understand what game plan, what approach has been from KP. Shahzada Farhan, we talk about matchups, it's been brilliant. He has already gone against Mehran to score runs, so it's not a good option. Have a look at that again, just soft hand. Missed the ball. Just run well, really well. Loud calls. That has been their attribute, this partnership so far, or 87. This one just a slight confusion. But this is important. When you're not getting those boundaries, you need to rely on those quick ones. It's a huge boundary everywhere. Did get hit on the shoulder. It's come off the glove into his bicep. When it comes off something, it gains space. I think he got into two minds, whether he wants to work it around fine leg or just block it. One more delivery to go in this over. Northern, they had the lady luck smiling on them yesterday. They were provided with an opportunity, they grabbed it, but it's not going to be miracles every day for you. You're playing semi-final, you need your resolute plans, you need your execution right. Because the margins of error in such knockouts are very small. I might feel Umar Amin just being a little too anxious with his bowling options have made things easier for Khyber Pakhtunkhwa. Good crowd here, they're coming in numbers. Still got the second semi-final under lights. Happy faces, happy to see themselves on the screen. We expect more of the crowd to walk in. You like some Bhangra music, Sikandar? I love it. I'm the best at it. Been awarded the best Bhangra dancer for the last 15 years. We need to see some moves then. I charge, so that's the problem. But I wouldn't mind joining them. Which stand are they? And we can actually go there. It's a very nice thing if they are to our left. Kingdom Valley owns everything. That's good. It's nice to see them getting these guys to perform, and this is extra entertainment. It's so much fun. Cricket is a sport which brings people together, and just like any other sport for that matter. But for the people in the subcontinent, Pakistan, it is definitely an outing, a picnic, an entertainment, and something that they love, which is the game of cricket. They love being on the camera. They love holding banners, and they love their stars. The other day I was just walking around, and one of the spectators asked me
to request the chairman, Ramiz Raja, to have one of the T20s here, which England is playing. England will be playing the test match here for sure. That'll be great, and then the PSL games are to be played here as well. And you know, Multan Sultan has a huge support here. All set and ready. Rehan has got the necessary treatment. You see that broken glass bandage. It's a bit of a bruised bicep. It'll help him keep things intact till he's batting around there. One ball to go in the over. That will take KP halfway through their innings, and they are looking good with 87 for no loss. Good ball, good carry. Once again, we've seen Rohail just dropping it like a hot potato. 87 for no loss. Opening partnership, strong, up and running. Shahzada Farhan, the opener's still out there, going strong, 46. For Rehan Afridi, just 4 shy now of his 50. Everything right now going in KP's way. Northern will have to go extra mile to do something to bring things back in their control. They'll need some quick-witted captaincy of Umar Amin. Again wants to, but Farhan doesn't want it. This is a crucial over. We know that Sohail is here to bowl that 1 over, to get the wicket, to get this partnership broken. And we know that Rehan, who's taken a liking towards Sohail Tanveer's bowling, he'll probably try and go after him. What I'd like to see, Marina, here is he's on 46. Bat more and bat all the way. Don't throw your wicket after a landmark. Time and again we've seen that. In the air, but safe. Just a single. Definitely, he's well settled in. He's used to the pace of the surface. He's picking the ballers. We've seen that many times. New batter walking in does struggle to get hold of that sense. And they cannot afford, because they're chasing this target down. So they need steady hand going on. They're ahead of the required run rate. It's 8.61 and the required is 7. So keep it that way. Dig deep as you can. That's gone in the air. This is what they were looking for. Told you Sohail Tanveer is here to break the partnership. He'll go either way. And it has worked. All the experience in this man, he brings it. It's quite evident that he knows what he's bowling at. He's got squared up, wanted to work it into the leg side, probably just want to nudge it. Got the top edge, and rest was done by Rohail. Sigh of relief for Northern and for Sohail Tanveer. Farhan will have to take the walk. 39. Just going up to check this. No problems there. They'll take it. First blow for Khyber Pakhtunkhwa. The first opener walks back in the hut. 39 of 29 deliveries. Shahzada Farhan. Khyber Pakhtunkhwa, 89 for 1. Change in plans from KP. Change of batting order. Server Afridi has been sent, and we know why.
They want to keep up with this run rate that they've achieved of 8.4. He'll go after the bowling. Will it work? We'll have to wait and see. Direct hit will be trouble. Again, a throw and a miss. So yeah, this is a bit of a gamble here. Kamran Ghulam's number has been taken. Kamran also played 3 and 4. Well, at least Northern would feel they've got half a foot in the door at the moment. If they can get another wicket, then yeah, complete foot will be inside. That's what they should be looking for. Server new at the surface. He's not aware of what the pace surface might bring. So Hilton V still bowling. He's got 2 more deliveries. They might just keep server on strike. Rehan away from it to create some sort of pressure. Dot balls, that can matter. Can come back for 2. Can come back for 2. The first one has been very casual run. That's not good. Now Umar Amin can take that opportunity. He's been hiding Salman Irshad. He can bring him on from the other end with the new batter in. Umpire? No. Ball boys are here. Finally, in the semi-final, they're here. So now the fielders don't have to run outside and fetch the ball if it's hit for a 6. And it's always a very good thing for these youngsters. Watch the game nice and close. This is what I was saying Babar Azam did at one time. His first memory at a ground. Rehan gets a 50, his first 50 in this tournament. And he's played an all-important knock in a semi-final of a tournament. 93 for 1. Not far apart. Northern 190 for 1, Khyber Pakhtunkhwa 93 for 1. Northern, they can still get some grip on this game. Just a matter of few overs, few dot balls, and few wickets. Advantage for the Habarina is that Northern slowed down in the last 5. Otherwise, Shah Faisal's will of a super over can come true if they're going neck to neck. So they want another wicket. Mehran with his last over. Catch it. Very well bowled. Dekh, अच्छी जगह पे यहाँ पे करना है. Now here's what you want. At least 3 overs from Mehran. They had that option, would have been really good for Northern. Very well bowled. Very well bowled. बहुत अच्छे. Just to slow things down. New batter in, put some pressure. बहुत अच्छे. Pacers, they have been easily put off for runs. Catch it, catch. Oh. Zapish for a moment. It's going too hard. You can always allow Rehan to face that. चल खुद जाएगा बहुत अच्छे easy टाइगर. Rushes through his over. But a good one, just a single. Inside out, great shot. One bounce. Server, oh sorry, Rehan gets, and that's what I was saying. Server needs to take a single and give it to Rehan. That was a glorious strike, inside out. Stepping down. Never hit it hard. Effortless inside out drive. Oh,
If you want to learn one, that's how it's done. Good balance, good hands through the line. Off stump. What was he trying to do, Rehan? At the last moment, trying to close the face of the bat. He knows that he's had a brain fade moment. And Mehran Mumtaz gets a wicket on the last ball of his spell. Error in judgment. He knew that he was getting just enough turn away from him, Mehran. Trying to work it into the leg side, played it on. He'll be disappointed for sure. He had an opportunity to score big. Another one down for Khyber Pakhtunkhwa on 98. He has to take a walk. He played superbly for his 54. सुहेल तनवीर को वापस लाना ये अच्छा रहा। अभी एक ओवर बाकी है सुहेल तनवीर का। 2 ओवर जमान खान के हैं और 3 ओवर्स अभी तक बाकी हैं सलमान के। रेहान अफरीदी का इस मौके पर आउट होना एक रोशनी का सुराग जरूर मिलेगा नॉर्दर्न की टीम को। मेहरान ने चलते चलते अपने स्पेल का इख्तिताम किया इस कामयाबी के साथ, जो बेहद जरूरी थी। और ये गेंद निकल जाएगी, बहुत ज्यादा फाइन और तेज गई। खराब बॉलिंग सलमान इरशाद की और खराब नतीजा भी। विकेट गिरने के फौरन बाद इस तरह की बॉल बहुत ही मायूस कुन है नॉर्दर्न के लिए। सलमान इरशाद लाइन में चूके, लेंथ में चूके, फाइन लेग का फील्डर दायरे में था। सर्वर भी अभी नए आए हैं क्रीज पर और ये आइडियल होता है फील्डिंग साइड के लिए। स्टेज पे 2 नए बैट्समैनों का, लेकिन इस बाउंड्री ने प्रेशर रिलीज कर दिया किसी हद तक। फ्लैट बैट के साथ खेला 1 रन के लिए और ये भी किसी आर्ट से कम नहीं है। जो नए बैट्समैन को बॉलिंग करना होता है उस वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे नपीतुली बॉलिंग करें। और जितने भी दुनिया के नामवर फास्ट बॉलर गुजरे हैं उनका ये खासा था कि वो नए बैट्समैन को ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते थे, संभलने का बड़ा मौका नहीं देते थे, इसलिए अक्सर वो डबल ब्रेक थ्रू किया करते थे। जल्दी करनी पड़ेगी और इनको उठाने से कासिर रहे, वगरना ये खतरा हो सकता था। नासिर नवाज से पॉइंट पोजीशन पर फील्डर। आज गेंद उनके हाथों में जम नहीं रही। अच्छा मौका था यहाँ पे। देखिए कामरान गुलाम काफी पीछे थे। आपने बॉलर्स की बात की, वो अजीम बॉलर्स बने ही इसलिए। अगर आप नए आने वाले बैटर्स को अच्छी गेंद करेंगे तो वही वो वक्त होता है जो आप बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज को जल्दी आउट कर सकते हैं इनिंग्स के आगाज में। क्योंकि जब वो सेट हो जाए तो आउट करना मुश्किल होता है। कटर किया और दूसरे रन के लिए मौका नहीं मिल सकेगा। देखिए फील्डिंग में भी एक एनर्जी आ जाती है जब विकेटें गिरती हैं, आपको एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। मुबस्सिर, इनसे आज बॉलिंग नहीं कराई गई। 5 ही बॉलर्स पर इक्तिफा किया है उमर अमीन ने नॉकआउट मुकाबले में। हालांकि दूसरे स्पिनर की है गुंजाइश इस पिच पर। बिल्कुल फिर जल्दी करनी पड़ी। थ्रो खासी ऊपर से गई स्टंप्स के और एक वजह शायद ऑफ स्पिनर को ना लाने की ये है कि राइट हैंडर्स ही अभी तक मैदान में रहे हैं चारों। जी बिल्कुल, ये जरूर वजह है क्योंकि मुबस्सिर रेगुलर बॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने बॉलर्स की बात की कि अच्छी बॉल करें, फील्डर्स का भी रोल है। 2 नए बैटर्स आए हैं। इस तरह की सिंगल्स नहीं बननी चाहिए। इस ओवर में दूसरी मरतबा ये रन बना है।
ये बॉलर्स के प्लान को डिस्टर्ब कर सकता है। डॉट बॉल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा जल्दी बिल्ड होता है। 13वें-14वें ओवर का खेल चल रहा है स्टेज पर, बैटिंग साइड पर। फील्डर्स को एडजस्ट करना चाहिए। अभी भी दायरे के किनारे से शुरू कर रहे हैं फील्डर्स। फील्डर ज्यादा मुस्तैद नहीं दौड़े, लेकिन सर्वर का कोई इरादा नहीं था वापस लौटने के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक जो है वो अपने कब्जे में ही रखना चाहते हैं। 107 पर 2। ये दिन ढलते ही या छोटे बच्चे और ख़वातीन की भी आमद हुई है। और किंगडम वैली की जानिब से ये एक बड़ी शानदार पेशकश है। नेशनल T20 मोटर बाइक आप लकी ड्रॉ के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और तरीकाकार ये है कि आप मैदान में आइए और टिकट खरीदिए, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए। थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के खेमे में, क्योंकि आसानी के साथ बाउंड्रीज जा नहीं रही। 2 विकेटें भी गिर गई हैं सिर्फ 9 रन के इजाफे में ही। ये जो स्टेज होती है 10 से 15 ओवर्स के दरमियान हमने काफी इनिंग्स को डिरेल होते देखा है, खासतौर पर चेजिंग इनिंग्स को। नॉर्दर्न को इससे ज्यादा बेहतर क्या मालूम होगा जो कल इन्होंने किया सदर्न पंजाब के साथ। एक ही ओवर में 3 विकेटें गिरने से वो रन चेज बिल्कुल ही एक तरफा हो गई। हालांकि उस वक्त तक मुकाबला सदर्न पंजाब के हक में था। एक बार फिर फील्डर को दबाव में लिया, यहां दूसरा रन भी बन सकता था। गेंद हाथ लगी नहीं। मेहरान मुमताज के नौजवान खिलाड़ी होते हैं दायरे के अंदर, आप हमेशा उनसे तवक्को करते हैं कि वो चैलेंज करेंगे रनर्स को। लेकिन ये भी दबाव है नॉकआउट मैच का, जो इस वक्त फील्डिंग पर भी झलक रहा है। और ये बैटिंग टीम के ड्रेसिंग रूम पर भी इसके आसार हैं। ये भी जानते हैं कि इस तरह के मैचेस में, सेमीफाइनल, फाइनल में, रन चेज में एक आध विकेट गिरने से हालात जो हैं वो यकसर बदलने लगते हैं। सरवर अफरीदी की शोहरत जो है वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन की है। रावलपिंडी में इनने दिखाया भी था अपना जलवा, लेकिन मुल्तान आने के बाद ये ज़्यादा बॉलिंग करने लगे। आज इन्हें चौथे नंबर पर भेजा गया ताकि रन बनाने की जो औसत है वो मुश्किल ना हो, 1 डाउन आए खेलने के लिए। हैरान कौन लगा कि वो तीसरे नंबर पे उनको भेजा गया। कामरान गुलाम से पहले शायद ये नजरिया हो कोच अब्दुल रहमान का कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको ज्यादा ऊपर ना जाने दिया जाए। 8.46 की औसत से रन बनाने हैं खैबर पख्तूनख्वा को। ये थोड़ी नीचे रहती है। यहाँ पर उस्मान शनवारी अच्छा दौड़ कर आ रहे हैं। 2 विकेटें गिरने के बाद दोबारा आवाजें सुनने को मिल रही हैं नॉर्थन की फील्डर्स की। अच्छी शॉट सिलेक्शन नहीं थी, ये अच्छी शॉट सिलेक्शन थी। सीधा खेल सकते हैं क्रॉस, यहाँ ज्यादा हिटें लगी नहीं। इनवेरिएबल बाउंस है और उसकी वजह से सीधे बल्ले से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, चाहे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, मिड ऑफ के ऊपर या बॉलर के सर के ऊपर से। यहाँ ये ज्यादा बेहतर तरीका था, सामने खेलकर 1 रन हासिल किया। फास्ट बॉलर के खिलाफ ये ज्यादातर रन्स जो हैं या कट शॉट पर बनाते हैं या फिर चार्ज करते हैं। और जो सामने बी में
इनको काफ़ी रन्स मिलते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने जायज़ कही कि ये जो पिचेस रावलपिंडी की और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की थी, इन पर बेहतर टेक्निक का होना और जिस तरफ गेंद है उसी तरफ खेलना बहुत ज़रूरी था। और वो जो पहले वो क्लब क्रिकेट में कहते थे कि हाँ मार 4.5, वो वाले रन्स, वो वाला तरीका जो है यहाँ चलता नहीं है इन पिचेस पर। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि एक मेथड जब तक आपका नहीं है और आपकी रेंज नहीं है शॉट्स की, आप एक रेंज पे रिलाय कर नहीं सकते। आपको ज़्यादा ऑलराउंड अपनी गेम इंप्रूव करनी होगी तो इन विकेटों पे रन्स होंगे। ज़्यादा जल्दी बाहर आ गए थे, इसलिए क्रैम्प होकर रह गए। सरवर आफरीदी अच्छा ओवर रहा, दबाव को बरकरार रखा शिनवारी ने। 14 के बाद 112 2 विकेट पे। बैटिंग का 14 ओवर्स के बाद 112, 2 खिलाड़ी आउट। और दिलचस्पी की बात यह है कि 14 ओवर्स के बाद नॉर्दर्न के भी 112 ही थे। बिल्कुल बराबर मैच चल रहा है और 2 ही खिलाड़ी आउट थे। इससे ज्यादा बराबर मैच हो नहीं सकता। सिकंदर के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा वो उस वक्त सुपर ओवर करवाएंगे जब पावर प्ले के बाद स्कोर बराबर होगा। 10 और 15 ओवर के बाद भी स्कोर बराबर होगा और 20 के बाद भी। चले सिकंदर, 15 के बाद तो नहीं लेकिन 14 ओवर्स के बाद जरूर स्कोर बराबर है। जो मतलूबा रन औसत है वो इतनी ज्यादा नहीं है अभी भी, 8.83 आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। ये बिल्कुल आपने वजह कहा, लेकिन ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में एक तो आपको नॉकआउट मैच का दबाव होता है, रन चेज का अगर इसमें दबाव शामिल हो जाए, क्योंकि जब भी ये डबल फिगर में जाएगी ये जो रिक्वायर्ड रेट है तो वो फिर दोहरा दबाव आपको झेलना पड़ेगा। वो नए बैट्समैनों के लिए तो फिर एक बवाल बन जाता है। सुहेल तनवीर का ये ओवर बड़ा अहमियत रखता है और शॉर्ट गेंद और पिल पड़े इस पर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया सरवर आफरीदी ने। ये जानदार शॉट था बिल्कुल। और जिस सरवर आफरीदी को हम जानते हैं वो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए मशहूर हैं। इनटू द पिच बॉल था, रूम ज्यादा मिल गया। सरवर आफरीदी को हाथ चलाने का मौका मिला। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को ही बीट करना था उन्होंने उनके ऊपर से खेलकर ऐसा किया। ओवर के आगाज में बाउंड्री से प्रेशर बिल्कुल वापस सुहेल तनवीर पर आ गया। 12 गेंदों के बाद ये चौका मिला है खैबर पख्तूनख्वा को। अब थर्ड मैन को आगे लाया गया, लेग साइड में बाउंड्री पर एक फील्डर का इजाफा किया गया और तेज शॉट सीधी जमान खान के पास गई और उनको पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। बैट स्पीड जो है ये बड़ी आला है सरवर की। जारहाना शॉट्स खेलना, बाउंड्री को आसानी के साथ क्लियर करना, अपनी इसी खासियत की बदौलत ये इस टीम में है। आमिर अजमत एक और अच्छे हिटर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। कामरान के लिए थर्ड मैन के फील्डर को पीछे भेज दिया है। यहाँ बड़ी सूझबूझ दिखा रहे हैं कामरान गुलाम, जल्दी में नजर नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो टेम्परामेंट है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर अपने आसाब पर काबू रखना ही इनको हदफ की तरफ ले जाएगा। शायद इसीलिए उन्हें नंबर 4 पर भेजा गया है ताकि वो इनिंग्स को इकट्ठा रख सकें और मिडल में एक ऐसे तजर्बेकार खिलाड़ी की ज़रूरत है जो इनिंग्स को डीप लेकर जा सके। फील्डर्स की बात हो रही थी, ये देखिए दायरे के फील्डर्स जो हैं बिल्कुल दायरे के एज पर हैं। सरवर आफरीदी की बार तो अब ये समझ आता है कि वो 17 पे खेल रहे हैं, लेकिन 2 ओवर्स पहले भी यही हालत थी। काफ़ी सिंगल्स कंसीड किए नॉर्दर्न ने। हाँ ये फुल टॉस लेकिन फायदा उठा नहीं सके।
1 रन का और इजाफा 6 रन इस ओवर में पहले ही आ चुके हैं और जो औसत दरकार है 8.62 की, ये अब तक तकरीबन ये पार ओवर रहा है। 7 रन बन चुके हैं पहली 4 गेंदों में। नजीर मदन की टीम ब्रेक थ्रू हासिल करने होंगे मुसलसल अगर इस इनिंग्स की पेशकदमी को रोकना होगा। पार्टनरशिप यहां से लगी और रन चेज आसान होती चली जाएगी। यहाँ दूसरा रन के लिए इनको वापस आना चाहिए। फील्डर को दबाव में लिया और सुहेल तनवीर ने ये मौका जाया कर दिया। गेंद उनके हाथों से निकल गई और ये जाहिर कर रहे हैं कि शायद पसीना था हथेलियों में, लेकिन कुछ भी था, ये पहुंच गए सरवर आफरीदी। अगर गेंद को कलेक्ट कर लेते तो यकीनी तौर पर विकेट मिल जाती। देखिए कामरान गुलाम बिल्कुल सीधी लाइन में दौड़े, सरवर आफरीदी पीछे थे। जजमेंट और कॉल कामरान गुलाम की थी, सरवर आफरीदी यहां पे आउट हो जाते अगर सुहेल तनवीर बॉल पकड़ते तो। या बैकअप भी नहीं कर रहे थे सरवर आफरीदी, जो है अपनी क्रीज के ही असीर रहे जब तक गेंद डिलीवर हो नहीं गई। ये अच्छा स्क्वायर ड्राइव इस बार एक ही बन सकेगा। फील्डर पूरी तरह फुर्तीले थे। सुहेल तनवीर का ओवर खासा महंगा रहा, 10 रन देकर गए 122 पर 2। काफी दिलचस्पी से भरा ये बॉलिंग कार्ड है। सुहेल तनवीर के ओवर्स पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। मेहरान मुमताज के साथ बॉलिंग का आगाज किया, पावर प्ले में 2 ओवर उन्होंने कराए, उनका भी कोटा खत्म हो चुका है। 2-2 ओवर सलमान इरशाद और जमान खान, 2 स्लिंगी बॉलर्स, और 1 ओवर शिनवारी का बचा है जो आखिरी ओवर कराने के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न के लिए। लेकिन अपने कार्ड्स काफी शो करा दिए हैं पहले ही नॉर्दर्न के कप्तान उमर अमीन ने। ये आखिरी ओवर जो है ये आमतौर पर शिनवारी करते हैं उमर अमीन का, इन पर खासा इन्हिसार है। और अब ये 16वां और 18वां ओवर जो है, या फिर 16वां और 19वां ओवर जमान खान करेंगे और इसी दौरान हम बॉलिंग करते हुए सलमान को देखेंगे। ये पुल शॉट, यहां पर फील्डर को तैनात किया गया है और ये बड़ा उम्दा कैच, बैकवर्ड जाना पड़ा मुबस्सिर, जिन्होंने बड़ा अहम कैच पकड़ा। और ये अहम लम्हा हो सकता है इस सेमीफाइनल मुकाबले का, क्योंकि कामरान गुलाम गए हैं जो ग्लू का काम करते हैं केपी के लिए मिडिल ऑर्डर में। तजर्बाकार कामरान गुलाम फील्डर बाउंड्री लाइन से काफी आगे थे, इसका ही शायद फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुबस्सिर ने अच्छा जज किया। बहुत ही प्रेशर वाला कैच था और शायद जमान पहले उन्हें आगे देखकर हैरान हुए, लेकिन अच्छा जज किया और खुशी की लहर दौड़ गई। अहम विकेट, कामरान गुलाम 8 बनाकर वापस हुए। केपी 122 पर 3। बहुत ज़्यादा डेप्थ है खैबर पख्तूनख्वा की बैटिंग में। आदिल अमीन एक और ऐसे खिलाड़ी हैं, 70 मैचों का तजुर्बा है। स्ट्राइक रेट भले ही इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने भी खेली हुई है, जानते हैं दबाव से निपटना। इस तरह के हालात में बाजी में भी खेल चुके हैं। फिर जल्दी करनी पड़ी और क्या ये पहुंच सकेंगे? थ्रो आई, लेकिन खासी कमजोर साबित हुई।
स्क्वायर ऑफ द विकेट। आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि थ्रो तेज आएगी विकेट कीपर तक, अलबत्ता इस बार ऐसा नहीं हो सका। ये कामरान गुलाम, और ये देखिए मुबस्सिर को पीछे जाना पड़ा। एक लम्हे को ऐसा लगा कि शायद वो मिस जज कर गए, टाइमिंग हासिल नहीं कर पाए। ये क्रॉस द लाइन शॉट्स मुश्किल हैं इस पिच पर, और कामरान ने उसी का खमियाजा भुगता। या मुबस्सिर क्योंकि 2-2 रन्स बन रहे थे, ये मिड विकेट स्क्वायर लेग के इलाके में खेलकर बना रहे थे कामरान गुलाम और सरवर, इसलिए उमर अमीन ने उनको आगे खड़ा किया था। लेकिन कैच को अच्छा जांच लिया उन्होंने। और ये भी एक आदत है जमान खान की, विकेट लेना, जीत जाना इन डेथ ओवर्स में आकर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। वो अपनी टीम के लिए एक उम्मीद हमेशा लेकर आते हैं। मुश्किल एक्शन है और इस तरह के एक्शन पर ऊंचे शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। पावर प्ले में 13 डॉट्स किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा है। मिडिल ओवर्स में इस टूर्नामेंट में इनका इकोनॉमी बेहतर है। नॉर्मली ये डेथ में भी काफी माहिर जाने जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जिस तरह ये स्लिंगी एक्शन, राउंड आर्म के साथ बॉलिंग करते हैं, सफोकेट करते हैं, इस मरहले पर आकर बैट्समैनों को रूम के लिए क्रैम्प करते हैं, अच्छे यॉर्कर्स करना जानते हैं। ये मैच अब बहुत ही दिलचस्प हो गया है। खास 7 ही विकेटें बची हैं खैबर पख्तूनख्वा के पास। और क्रिकेट बहुत हो रही है इन दिनों। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की भी आमद है। 1 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान और भारत की टीमें भी एक्शन में होंगी। और ये शॉट खेला है, फिर हवा में, फिर हाथों में। मुतबादिल खिलाड़ी हुरैरा, जिनको अपनी जगह से 1 इंच भी हिलना नहीं पड़ा, और फिर से कामयाबी ने कदम चूमे जमान खान के। दूसरे मैच में मुसलसल आदिल अमीन इसी तरह इसी किस्म के शॉट पे आउट हुए हैं अपने इनिंग्स के आगाज में ही। पहले स्पिनर्स पे स्वीप शॉट और इस मर्तबा जमान की स्लोअर डिलीवरी। देखिए फील्डर को 1 इंच भी नहीं हिलना पड़ा, सीधा गेंद उनके पास चली गई। आदिल अमीन हैरान और परेशान, लेकिन अपनी ही गलती है, फील्डर को देख लेना चाहिए था। आदिल अमीन एक मर्तबा फिर नाकाम हुए और नॉर्दर्न का कमबैक जारी 126 पर 4। मामला खासा हसास और अब नाजुक सा हो गया है। मुसलसल विकेटें गिरने के बाद कप्तान खालिद उस्मान, जिनकी बड़ी अच्छी साख है कि ये मुश्किल रन्स बनाते हैं, उन खिलाड़ियों में से नहीं हैं जो आसान रन्स बनाकर निकल जाते हैं या रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। ये जितवाने के लिए खेलते हैं दोनों ही हाफ्स में। लेकिन ये ओवर कितना काबिल तारीफ है। जमान खान आए और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। पुल शॉट खेलना हमेशा ही मुश्किल होता है इस तरह के एक्शन के हामिल बॉलर्स पर, और ये स्वीप करने चले गए। हुरैरा ने अच्छा कैच लिया। तो ये लड़ाई अब बड़ी जान सतान हो गई है यहाँ मुल्तान में। केपी बनाम नॉर्दर्न, बड़ी उम्दा बॉलिंग जमान खान की। 127 पर 127 पर 4 रहा था। You still can't pick a side. Has been scintillating action so far in this first semi-final. Khyber Pakhtunkhwa, they got off to a good opening start. Saadzada 39, Rehan good 50, 54 there. Server 20 still out there with the captain. Northern are being resilient, fighting their way back in. Salman Ishrat to continue. Oh, we'll have to see if that's a no ball. They're pushing for the second. No, it's not available. Keep an eye on the umpire. Ali, any side to be picked? It's too early at the moment. It can go either way.
There's been such a fantastic comeback from Northern side. They have this habit of doing it. But what about KP? They're losing their way. They were doing all right. Sabzada, Farhan, Rana, Afridi, and then there's 3 wickets falling at quick time. Had just given that hope to Northern they were looking for. Checking the no ball on the other end. No problems there. Just the height. The beamer. Oh, very uncomfortable height, and I think really get away with it. Looks like a difficult one for the bowler. It was dipping though. That's the only thing that can go in his favour, but umpire is the final judge. For an over, Zaman Khan bowled 2 wickets, giving away just 5 runs. For a moment we thought maybe Northern missed the trick with Mehran, but paces are making their mark. Talking about KP, would you think that maybe Amir Azmat was a better choice than Adil Amin? Yeah, he could have taken a chance with him, but Khalid Usman probably looking for some stability, because already we have got Sarwar on the crease, and Sarwar is the one who really looks to go big. That can be the only reason, in my opinion. But what about that Northern? They have this habit of making a comeback. Yes, as it was expected, no ball given. You got to be careful, Northern side. You put them on back foot, you got to keep them there. That's not what you want at this stage of the innings. Free hit, and it's going to race away for a boundary. Very poor delivery to ball on a free hit, giving the license. He didn't middle it. You can see the expressions. Did he find the bat at all? That is poor cricket from Salman Irshad. You build up a bit of pressure and just letting it go through these poor deliveries. And Khalid Usman is definitely looking for a no ball again. He's been hit. Yeah, I think Salman Irshad is in trouble again. That's not the problem. The problem is where the ball is ending. How unfortunate, bowling 2 full tosses. Look at that. Touch and go. He might get away with this one. Might. Very deep in the crease. I reckon he got hit just above the thigh. It's a tight call. The umpires are being tested today. Such a crucial moment in the game that one decision either ways can change the course of the game. This one is a crucial one. Which side this will go? We don't know yet. 2 poor deliveries. There is a no ball. It's going KP's way. Salman Irshad needs to pull the socks up. You cannot afford to give these free runs at this crucial stage. You need to be very spot on. 4 runs also. And you'll have to re-ball that free hit delivery. That is poor cricket. Without a ball being bowled, he's already given away 7 runs. Can this be the turning moment? I dare say. Free hit for Khalid Usman. Oh, he's launched it. Field is coming underneath, but won't matter. Could be looking for a couple. No. Such so unfortunate then when all the bench is bowled good deliveries and then you come and bowl a poor ones. That really lets the team down. And that is what is happening here with Salman Irshad. They build up the pressure all right. And with those 2 deliveries, rather 3 now, they're just losing that grip on the game. 30 of 23 deliveries. Good follow-up ball, just a single. It won't matter, they already have reached the required run rate for this over. Anything else will be a bonus. And they've got more than that they wished for. Just 3 deliveries. They got, what, 11 runs already of the over. It's a big one, huge one. In fact, 9 runs of the over.
If they can get one boundary here and there, that will make even things up for KP. Another quick single. That's good bowling, keeping things tight, giving no room whatsoever or the length to Khalid Usman. He can go big. 22 of 19 server. Yeah, your answer to your question is probably server, that, as you were talking about earlier, he's the dasher, and you need a sane head on the other hand, the captain, who can play along with him. Amir Azmat, we know he's a very talented one, but he's a big hitter of the ball. So that is the reason, maybe. Oh, that's going to race away for a boundary. This is turning out to be a very expensive over for Northern, and KP are sizzling away towards the win. Yeah, we can say that this over might change the luck for Northern. This is poor. That is very average bowling. Once you've already given those extras, those free hits, those boundaries, nothing working for Salman Irshad and Northern. They made a great comeback, but now I have a feeling they've just let loose of the grip. I had to go with Salman Irshad because how they divided. Pushing for the second one. The fielder needs to put some leg work in. Does well. Oh no, it's an overthrow way over Ruhail's head. This is sloppy fielding from Northern. Bad throw, no backing up. Couple of mistakes. Yeah, you cannot blame Ruhail Nazir. Look at that wayward throw. He had no chance, way over his head, and there was no one backing up. That is schoolboy stuff. You got to be backing your wicketkeeper. Northern losing it all. 16 already. Got one more delivery. Will be a dot ball, but they've already grabbed a lot of runs off it. 17 coming. 17 overs gone. KP is 144 for 4. It's 21 now of 18. Salman Irshad. If Northern lose, that will be the over they'll have to look back. You would feel that miscalculation was evident with Mehran's over. You need someone like Mehran from your 8th till 14th or 15th over to just slow things down in the middle. They went with him too early, I guess. Well, that has been the plan for Northern from last few games that we have witnessed, that they use slingy, both of the stringy bowlers, Zaman and Salman Irshad, in the death overs. They've done well, but today it's not working for them. Yesterday they were good with it, but it just didn't work out today for Salman Irshad. Pressure of the situation, maybe. Big game, semi-final, maybe. Oh, they're inquiring, but umpire's not interested. Single taken. He bowled brilliantly the previous over. 2 wickets, just 5 runs. But that was neutralized from Salman over for KP. It's all about singles now. We can do this in singles. It's pretty easy at the moment. 20 runs, 17 deliveries. Yeah, that over from Salman Irshad. Just lost the hope after that. Outside off stump, you'll be punished there. Slammed by Khalid Usman. Fantastic shot. Shot of some authority. Poor bowling, yes, but execution of that shot was brilliant. Look at that outside the off stump. That bat speed and placement, everything good about it. Things are slipping away for Northern. Who can stand up? Zaman Khan probably. Oh, they're straying down the leg. That's the least thing they want. KP, a run out. Everything's on track. Take it easy, boys.
Absolutely, just run a ball. 16 or 15 now. There's no need to panic. Just play the basic cricket. Just play the regular cricket. Take singles, couple runs. A boundary here or there would do. So now we can say that KP is in a commanding position in this game and should win it from here. A couple of things for Northern to take with them. Probably 15-20 runs shy. That'll be a wide for sure. 150 up for KP. I was hoping for that last over finish again that we've witnessed so many games in this tournament. 10 of them going to the last over, the last delivery. Just been such a fantastic tournament, I tell you. I was hoping that we might see same sort of a semi-final. All eyes on the second semi-final now, since taking on Central. Exciting. 11 extras for Northern. Big concern. Quick single. You were hoping for a close finish. Shah Faisal was hoping for a super over. All wishes don't come true. Yeah, but we still have to wish. We have to continue wishing. Sometimes, someday, you never know. You have to keep believing in what you ask for. KP has asked for a good win. They lost their momentum in this tournament, but came back in the game yesterday. And now they're almost qualified for the finals. Good ball. Showing his skills, Zaman Khan. Going to fight till the last ball. It has been an exciting tournament. Kingdom Valley National T20. Till last night we didn't know who were the finalists, semi-finalists. Doesn't get any tougher than this, Marina. The last league leg, we didn't know about the semi-finals. But this is pretty easy to judge. Straight down the ground, they've got protection there. And they're pushing for the second one. And there's confusion. And a vivid throw. Everything is happening out in the middle. Pressure. That is the pressure of situation. 18 overs gone, 152 for 4. They've had a good tournament, Northern. Few ups and downs. They came back strong with the team. A lot of areas of concern. One is the extras. They've given 49 wides and 14 no balls. That's the highest from any team in this tournament. He had a lot on his plate, struggling with the batting, few death over bowling problems, fielding, finding combinations. Wasn't an easy tournament for him. Yeah, but one also in the list, that was fitness. Ali Imran got injured. So did Umar Amin, was not included in a couple of games. Sohail Tanveer, half fit. So, but still, I would just give it to them for qualifying for the semi-final. That is still a huge effort by them. Talking about Southern, they would be cursing themselves for losing that game yesterday. They had it in their hands, 130 odd to win. They had a good start and then messed it up in the middle overs. Had they won it, they would have been playing here. Unlucky. Shinwari to continue from the pavilion end. 30 now of 2 overs. Got long on, long off. Deep square leg, deep mid wicket. Deep cover. All patrolling the boundaries. Oh, that sounded really well. And it's traveling. That is what Sabah can bring. Entertainment till the last. Authority. They want to do it in a hurry. They want to do it in this over. And this shot suggests that. Look at that length delivery, easy pickings. Any good hitter will always put it over the rope. That is poor execution by the Northern bowlers in the end.
need to keep the opposition in consideration where you're bowling, what your plans are. You cannot be just going out there clueless. Good follow-up delivery. No run there. 7 now. 10 deliveries. Khyber Pakhtunkhwa has been really good. The way they came back, they dominated the Pindi leg, lost all 4 games initially in Multan, but then they gelled together. Fought, and resilience is their second name. 100%. At one moment, we all thought they might not qualify, but they've done a great job. They were worried. They made a few changes. Rehan Afridi coming into the side. I think that was a good change. And making him open the inning was even better decision, because in the first game he played at number 4 and then opened the inning. That's Ali Imran there. It was the main man in Pindi leg, but got in unfit. That has been their loss, biggest loss most likely. Slow bouncer. He's got some set of skills, and there'll be a wide. Oh, not a good option if it doesn't end well. Nothing has worked for Northern, especially in the last 3 or 4 overs. There was one point when they made a comeback, but then that over from Salman Irshad, I think that was the point they lost hope. All the heads went down after that over. We didn't see any urgency after that. We didn't see any voice, hear any voice from the fielders. No backing up whatsoever. They lost it there, I believe. That's going to haunt them, for sure. 2 is the call. Fielder does well. Contain them a single. Khyber Pakhtunkhwa, they're a team to watch in domestic. In 2019, they were the semi-finalists. 2020 winner, 2021 winner, and now they have another chance at the trophy. You're just talking about T20 cricket. What about 4-day cricket? They won that also. They were beaten by Balochistan and for one in the Pakistan Cup, but they won everything, literally everything. They've been so dominant in this domestic circuit. It's such a huge side. Credit goes to the sporting staff, Abdur Rahman, the coach. Got trainer Fatullah as well, the coach, batting coach. Oh, good delivery. And there's a chance of run out. Jinwari will outrun Sarwar. He's not even taking the chance with the throw. That has been the sort of luck for Northern. He said, I'll run it and run him out. A very handy inning by Sarwar, coming to an end. Look at that. Khalid Usman was never interested. He's not even saying no. Just do it on your own, whatever you want to do. Jinwari isn't trusting anyone, not even his throw. Is there a twist? I don't think so. There's 5 needed. You people wish. It's 160 for 5. You have to give credit to each and every player who has participated in this tournament. The conditions weren't easy. Day games were even harder. Hot, humid, back-to-back games. They all stood up, they came, they got ready, and they tried their best for their teams. And the intensity of the games, I think that has been brilliant. They fought well, played well. The results might have not gone, but yes, cricket has been fantastic. Good Yorker, and another chance of run out. No bullseye this time. Sohail Tanveer needed to direct hit. It was
And is there a lot of time? He could have taken a little more second. Had he hit it, it would have been curtains for Khalid Usman. Tells you the story for Northern. Disappointment definitely there. They were almost out the other night. They had fate shining on them. They grabbed the opportunity, came back hard, won, survived just one more day. They just had to stay in Multan for one more day. That's the only difference. They played poor cricket yesterday. They ended well though, but today also they've been poor. Just a hit away. And hit it is. That's the winning run for Khyber Pakhtunkhwa. They've won it convincingly, and the first team to qualify for Kingdom Valley National T20 Cup. Remarkable performance. It's a complete performance by KP. They've outplayed Northern in all the departments in this game. This is an authoritative win, winning it by 5 wickets. It's a big win. Northern did try well, but in the end they were short a few runs, and that is the result. Khyber Pakhtunkhwa winning it by 5 wickets and qualifying for the finals. How huge is it? They're developing the habit of winning games, winning tournaments, and you have to give credit to each every one of them in that black kit. They had their downs, but they came together strong, and what they stand for is don't give up. The winning runs coming from the bat of Amir Azmat. This lad is very talented. He looked to hit straight, and that's what I thought. They will finish it in the same over. So they did. A convincing win, a win that mattered. They were hurt after those 4 consecutive losses. They made a comeback in the last league game, and now this authoritative win. This is a brilliant performance by Khalid Usman and his boys. Khyber Pakhtunkhwa through to the finals. You have to give credit to Northern as well. With their resources, they made most of it, but really couldn't end on the finishing line. And again, they had their problems. They stood together. They made sure each and everyone performed with their best capacity, but it wasn't their day today. They fought back well, but Khyber Pakhtunkhwa got the better of them. Happy scenes, they're all smiling. Back to winning ways. That's where they belong to. KP side, they've been prolific. Players going for the national duty, it hasn't made much of the difference. Yeah, absolutely. Congratulations, Khyber Pakhtunkhwa, for qualifying to the finals. The chase went on with some serious opening partnership between Saidada Farhan and Rehan Afridi. Afridi reaching his 54, Server contributing 37. Khalid Usman and Amir Azmat made sure they crossed the winning line, and 5 wickets remaining in their hut. It has been the struggle for this bowling unit from Northern. Sohail Tanveer, 34 runs. Expensive. Mehran Mumtaz, 32, 1 wicket. Salman Ashfaq, very expensive, 38 under the situation. 2 wickets for Zaman Khan. He bowled probably the best of this lot. No wicket for Usman Shanwari, gave away 32 runs. Khyber Pakhtunkhwa chasing the target. They backed their opening pair. Saidada Farhan got fantastic 100 the other day. He continued from where he left off. Some exquisite shots. Rehan Afridi was one to watch. He took the attack straight away to Northern. That was a no ball, so it never mattered if the catch was taken or not. They managed to capitalize on every loose delivery, and above all, Saidada Farhan neutralized the threat Mehran quite early in the innings. And the rest was just history. Northern was under pressure straight away. They gave away runs on both sides of the wicket. That was a glorious hit down the ground. Saidada Farhan looked exceptional. Rehan Afridi, on the other hand, kept that foot down on the accelerator. It wasn't a problem. That was a big one. A lot of bottom hand coming in. First blow. Sohail with an easy catch. It was undone.
was glorious hit. छोड़ के नहीं करना None Afridi kept on capitalizing, and then the very next ball he gave away his wicket. Yeah, this was the time when Northern thought they were back in the side, but they just kept on giving the boundaries. Look at that poor delivery from Sohail Tanveer. Zaman Khan did try his heart out, a couple of wickets to him. Kamran Ghulam being the very important wicket he got at the time when they just made a comeback, courtesy to this wicket also. Adil Amin playing it straight to Herrera, and then came this over. Everything went KP's way, the no balls, the boundaries, everything. And in the end, Khalid Usman was too good for this chase, and Sarwar along with him, those big hits. And that was the moment when Sarwar got out very unlucky way, because he played a good inning. He was promoted up the order, he stood there, scored runs, and in the end, Amir Azmat doing it in style. Happy faces. Khyber Pakhtunkhwa qualifies for the final, the first team to reach there for Kingdom Valley National T20 Cup. And that's the confirmation. Northern choosing to bat first, posted 164. Nasir Nawaz with 72, Umar Amin with 32, Tehmoor with 21 important contributions, but maybe few runs short. Arshad Iqbal grabbed 2, Khalid and Abbas with 1 each. In reply, KP were on a very strong foundation. Rehan and Saibzada's opening partnership, and then 37 from Mohammad Sarwar did the work. Zaman with 2, Mehran and Sohail with 1, but really couldn't contain them. Khyber Pakhtunkhwa winning with 5 wickets, and the first team to reach to the final. We'll take a short break, and then we will join Sikandar Bakht with the post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of the first semi-final between KP and Northern, and KP becomes the first team to qualify for the final of the Kingdom Valley National T20, and it's the third time in consecutive that they have qualified for a final. So well played by KP, and they won this match by 5 wickets. Before we call upon the Kingdom Valley player of the match, I'll welcome the famous Ghulam Hussain Shahid. He's the chairman, Kingdom Valley. And he will be presenting the Kingdom Valley Player of the Match, 25,000 rupees cash and the trophy to Rehan Afridi. Rehan Afridi is brilliant, 54 of 39, 7 boundaries and a 6. Opened the batting with Sahibzada Farhan and attacked the opposition and gave them a brilliant opening partnership. Made sure that KP stays alive in the tournament. We'll have a quick word with Rehan. रेहान, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी. ओपनिंग जो पार्टनरशिप रही साहिबजादा फरहान के साथ, उसका थोड़ा सा प्लान बताइए, क्या था जब इनिंग स्टार्ट हो रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने अच्छे मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ. हमारा यही प्लान था, जिस तरह रहमान भाई ने कहा है कि आप जाके सर्कल का फ़ायदा उठाए, और मैक्सिमम हमारा प्लान था कि हम 55-60 रन कर ले और विकेट लूज़ ना हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा. तो ये हमारा प्लान था. अच्छा, एडवांटेजेस में ये भी नजर आया कि जब आप लोग आए थे ओपनिंग बैटिंग करने, मेहरान मुमताज उनके मेन बॉलर चल रहे थे, आपने उनको भी अटैक किया, तो थोड़ा जो प्लानिंग उनकी शायद गड़बड़ हो गई इससे. बिल्कुल, उनका ये मेन बॉलर था और मैंने फरहान को यही कहा कि अभी नया बॉल है और ब्रेक नहीं होगा, और तो इन पे ही अटैक करेंगे और हम जितना हो सके हम सर्कल से फ़ायदा उठाएंगे, जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए. कितना आसान था एडजस्ट होना, क्योंकि जब आप टीम के में शामिल हुए हैं 11 में, तो उस वक्त टीम हारती हुई आ रही थी 4 मैच, तो आपके आने से और प्लस जो एक माहौल बना हुआ था ड्रेसिंग रूम में, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, जब मैं आया हूँ तो 3-4 मैचेस हम हारे थे, तो बस कोच ने यही प्लान दिया कि आप जाके अपना जो आपका नेचुरल गेम है सर्कल में, वो हमें सर्कल मार ले, तो वही हुआ. इंशाल्लाह उसमें कामयाब हुए. चलिए, टीम फाइनल में पहुंच गई, मुबारक और आपके प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए. थैंक यू, शुक्रिया. Rehan Afridi, the Kingdom Valley player of the match. Now I'll invite Umar Amin, the captain of Northern, to please come forward and have a few words with us. Umar. उमर, टूर्नामेंट ज़बरदस्त रहा, कल की जीत बड़ी शानदार रही, उसके बाद आज 160 भी आप कहेंगे एक ऐसा टोटल है सेमीफाइनल को दिमाग में रखते हुए कि अच्छा टोटल है? बिल्कुल, आई थिंक टॉस पे भी मैंने यही बोला था कि हम लोग वी वुड बी हैप्पी विद 160 प्लस, और आई थिंक वी गॉट टू 165, तो उसके लिए मैं तो बड़ा खुश था. फिर उसके बाद ओवरऑल थ्रू आउट द गेम हम लोग मैच में थे, लास्ट 4 ओवर्स तक. सिर्फ एक ओवर आई थिंक थोड़ा सा गंदा हो गया, जिसकी वजह से मैच स्लिप अवे कर गया. कुछ आपको लगता है कुछ टैक्टिकल ऐसे मूव से, जो आपने ग्लैम्बल लिया था, मेहरान को नया बॉल दिया पावर प्ले में 2 ओवर्स, वो शायद काम नहीं कर पाया, तो फिर जी बिल्कुल, जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक आज वो पे ऑफ नहीं किया. लेकिन अगेन आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ता है. इस तरह की सिचुएशन में कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ता है. आप एक टिपिकल, क्योंकि दूसरी टीम भी आपके खिलाफ प्लान करके आई हुई होती है, तो आपने हमेशा उनके प्लान के ऑपोजिट जाना होता है. अगर इन हाइंडसाइट देखें, क्योंकि सेमीफाइनल तो हो चुका, इससे पहले सेंट्रल पंजाब के साथ भी आपका एक मैच हुआ था, 160 ही आप लोगों ने स्कोर किया था, और आज भी उतना ही हुआ है 162, 163. आप लोग आखिरी 5 ओवर इतने ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं. 41 उस मैच में थे, आज भी कम रहे. बिल्कुल, आई थिंक ये एक था फैक्टर. लास्ट 2-3 गेम्स में हम लोगों ने इसमें स्ट्रगल की है. आई थिंक उसमें क्रेडिट मैं दूंगा, उस दिन सेंट्रल पंजाब के भी बॉलर्स ने अच्छी एग्जीक्यूशन की थी, अपने प्लान्स को अच्छा एग्जीक्यूट किया था. आज केपी के भी प्लान्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें कोई फ्री बीज नहीं दी बिल्कुल भी. इवन हमारे बैट्समैन सेट खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग खुलकर मार नहीं सके. तो आई थिंक उसमें दूसरी टीम्स को भी थोड़ा क्रेडिट जाता है कि वो उन लोगों का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था. आपकी टीम की और आपकी हार्ड फोर्ट सेमीफाइनल पोजीशन की जो चांस था वो था. ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका एज द कैप्टन, और आपने अपनी टीम में कोई ऐसे देखे हो प्लेयर्स यू फील कैन गो लॉन्ग? वेल, देखें, ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्नामेंट हुआ है. थोड़ा सा पिचेस मतलब इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, जिस तरह अपीयरेंस उसकी नज़र आती थी. अगर उसको कंपेयर करें, जिस तरह रावलपिंडी वाली लेग थी, वो उसमें हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं. जब से मुल्तान में आए हैं 160, 170 जो है वो विनिंग टोटल उसको कंसिडर किया जा रहा है. तो ओवरऑल आई थिंक मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. पहले भी कैप्टनसी की है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट था. थोड़ा मज़ा आया इसमें. टैक्टिकल अपने आप को एक ही गेम प्लान के साथ आप नहीं जा सकते थ्रू आउट द टूर्नामेंट. हर मैच में एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाते थे हम. तो ओवरऑल येस, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और जहाँ तक आपने बात की कि जो कोई यंगस्टर मुझे ऐसे नज़र आए हों, हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज़ जो अनफिट हो गए, मुझे उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है. इसी तरह नासिर नवाज़ ने बड़ा अच्छा लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा प्रूव किया कि वो इस लेवल की अच्छी क्रिकेट खेल सकता है. आमिर जमाल को तो आपने भिजवा दिया? आमिर जमाल को तो हमने भिजवा दिया, बिल्कुल. चलिए, वेल डन. Enjoyed your game, enjoy your team's performance, and better luck next time. Thank you very much. Umar Amin, the captain of Northern, and now Khalid Usman,
a very tired Khalid Usman. मैं खालिद उस्मान से बात करूं या उनकी टांगों से पूछूं कि क्या हालत है? 4 मैचेस लगातार हो गए हैं, 5वां आएगा। जी बिल्कुल, बस रेडी हूँ इंशाल्लाह, और कल का ही दिन है, बड़ा दिन है हमारे लिए, और प्लेयर सारे माशाल्लाह से रेडी है उसके लिए भी। ओवरऑल इस गेम का जायजा अगर आप लेते हैं जो आपने खेला आज, अगर 162 की बात करें, आपके फास्ट बॉलर इसने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा रन्स हो गए थे। आपको लगा था एंड में या 162 पे या 163 पे आप ओके थे कि यहाँ चेज हो जाएंगे? नहीं, मैंने यही कहा था लड़कों को कि 160 से नीचे जितना भी हो सके, लेकिन लास्ट के 5 बॉल्स में जिस तरह उन्होंने 43 रन मेरे ख्याल से हमने दिए, वो भी एक और 16 रन का लगा था, तो टारगेट अचीवेबल था। और ऊपर से जो रेहान और साहिबजादा खेले हैं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त उन्होंने मैच ऊपर से ख़त्म कर दिया। फिर एंड में जो हमें एक ओवर मिला है सलमान का, तो उधर से मैच सारा सीधा हो गया। फिर जिस तरह आपने जिक्र किया दोनों ओपनर्स का, फरहान और रेहान का, ऐसा लग रहा था कि आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दी हुई थी कि कोई भी बॉलर आए आपने सिर्फ अटैक करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम इनिंग्स ख़त्म हुई तो हडल बनाया और उनको मैंने यही बोला कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और इधर से हमने बस मैच सिर्फ जीत का ही सोचना है, तो वही चीज़ वो लेके चले और रिज़ल्ट आपके सामने भी। तीसरा फाइनल है लगातार केपी का नेशनल T20 में, इस बार भी आप लोग पहुंच गए हैं। वक्त कम होगा जिस तरह ये लगातार मैचेस हो रहे हैं। इस टर्न अराउंड में एज अ कैप्टन आप क्या बिलीव करते हैं कि मैं लड़कों को उनके हाल पे छोड़ूं, रिलैक्स होने दूं, या कुछ स्पेशल मीटिंग्स और इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए? नहीं, मीटिंग्स तो हमारी कभी जब हारे थे बीच में एक ही मीटिंग हुई हमारी, बाकी हमने मीटिंग नहीं की, और लड़कों को यही क्लियर माइंड से बस कहते हैं कि भाई अपनी गेम खेलो और एंजॉय करो। चलिए एंजॉय कीजिए आज की जीत और कल मुलाकात होगी। थैंक यू। Khalid Usman, the captain, the winning captain from KP, the first team to qualify for the finals. Be ready. In a while, we have the second semi-final ready. That's all from the presentation. Thank you very much, Sikandar Bucks. And this is what we have next. Semi-final number 2, the big game. It's Sindh taking on Central Punjab live from Multan Cricket Stadium. We'll see you in about 20 minutes.